kindly start her presentation, please. Madam, you will be sharing the slide or you want us to present? Madam Subuni, I can't hear you. Madam, we can't hear you. Sasmita madam. Okay, I'm trying. Madam, बहुत लो आसुची sound. Hello? Hello? Yes ma'am, we can hear you but तथापि बहुत low अच्छी madam. Hello? Madam, you will be sharing the slides or you want us to share the slides? I will be sharing the slides. ठीक अच्छी madam. Am I audible now? Yes ma'am, you are audible now. Okay, thank you. So good afternoon everybody. Respected Dr. Dinabandhu Saw, the team leader, Dr. Bijay Panigrai, the Director of Family Welfare, Sama Madam, my teacher, who is always concerned about the upliftment of the pregnant women, dear Ojaswini, Dr. Meena of UNICEF, Dr. Rudra, Dr. Aditya Mahapatra, who is the main person behind this as far as I know, and the person behind him, dear Rita, and also all the participants, doctors and staff nurses. So today I have selected two very common topics. One is active management of third stage of labor and another is episiotomy. So when I first joined Balangir Medical College and we worked with the district headquarters, then only we realized how much work is being done in the periphery, and the major portion of the delivery obstetric is being carried out in the periphery, and most of the normal deliveries are conducted by the staff sisters. So when this webinar is conducted, I came to know this webinar is being conducted by the UNICEF and NHM, who mainly focus on the practical and the skill development. I was very happy, and today I am happy and feel privileged that I have been a speaker of this webinar. So I thanks everybody for giving me the opportunity. So today my topic will be active management of third stage of labor. So before now going to active management of third stage of labor. So what, am I audible? Hello, am I audible? Yes, Asmita, you're audible. Okay, madam. Carry on. Okay. So what is third stage? Third stage is the complete delivery of the fetus up to delivery of the placenta and the membranes. And the time period is up to 30 minutes. But average time period is 5 to 15 minutes. And if we do active management, it is decreased to 5 minutes. So what happens in third stage? Hello? Hello? In the third stage, what happens? After delivery of the fetus, the uterus contracts and mostly the retracts. The difference between contraction and retraction is that retraction is permanent shortening of the uterine muscle. So the size of the uterus decreases, and as the size of the uterus decreases, the placenta separates. So in the third stage, the placenta separates and it comes down or descends. And after descent, there occurs expulsion. So in the third stage, there occurs separation of the placenta, descent of the placenta, and expulsion of the placenta. So during this period, after the placenta comes out, all the vessels of the uterus will be open, and there is every chance there will be severe bleeding unless these vessels are contracted. So how this bleeding is controlled? So mostly the major part, the bleeding is controlled by this retraction property of the uterine muscles. The intermediate muscles of the uterus are crisscrossly arranged. So they cause kinking of the uterine vessels, so that they are known as the living ligature. So they control the bleeding. So
The main aim of active management of third stage of labor is to make the uterus contract so that bleeding will be reduced. So all the care is being taken so that the uterus will contract in time, so that will be less bleeding, so that we will not have to manage postpartum hemorrhage, which is the #1 cause of maternal death. So what are the definition? The active management of labor consisting of interventions which facilitate the expulsion of the placenta by increasing uterine contraction to prevent postpartum hemorrhage by averting uterine atony. So our aim is to cause the uterus contract. So what are the steps? So what are the components of active management of third stage of labor? So the #1 is the administration of uterotonic agents immediately after birth of the baby. So immediately after birth of the baby, we have to administer the uterotonic agents. I will tell what are the agents commonly used. #2 is the delayed clamping. Previously, it was advised for early clamping. It has now been changed. It is now delayed clamping and cutting of the umbilical cord. Third is the controlled. This is very important. Controlled cord traction by Brand and Roos method. 4 is the uterine massage after delivery of the placenta. So these are the components of active management of third stage of labor. So when there is active management, another part is the expectant management. So what is expectant management? If you will, after the delivery of the baby, we will not manage actively. The placenta will come out definitely, but it will take long period and there will be severe bleeding. So to counteract that, we are going active management. So what are the oxytocics or uterotonic agents used in active management of labor? So #1 is the injectable oxytocin. So oxytocin is the first line agent. Very effective drug and effective within 2 to 3 minutes, and the advantage is it has very minimal side effects. There is almost no contraindication for oxytocin, and WHO recommends 10 units intramuscularly following delivery of the baby. But the one disadvantage is that it has to be refrigerated for preservation. Otherwise, its efficacy will be reduced. So, in active management, oxytocin is the first line of drug which should be used in every cases. But sometimes we see there is a short supply of oxytocin and maybe PPH occurs. So we have to go for the second line of drugs. What are the other drugs? Other drugs is injection methyl ergometrin. This is also a very effective drug. The dose is 0.2 milligram IM or IV at delivery of the anterior shoulder or immediately after delivery of baby. So this is also a very, very good drug, but this also requires temperature preservation in a cool environment and away from the light. But it has some contraindication, like it causes nausea, vomiting, and most important, it raises the blood pressure. So this is strongly contraindicated in hypertensive disorder pregnancy. If the blood pressure is high, don't give methyl ergometrin. It will raise the blood pressure and patient may develop convulsion. So this is contraindicated in hypertensive disorders, and also it is contraindicated in heart disease. Patients having heart disease or having severe anemia and arrest negative pregnancy, because it causes severe contraction. So this has now come down as a second line of drug. So in oxytocin, if it is not there, we can go for ergometrin, which is also a very safe, very effective drug. The third comes your misoprostol. Nowadays, this has also been a very easy, plentifully available, always available. It is available in tablets of 200 microgram. So in active management, we can give 3 tablets or 600 microgram of misoprostol tablet orally. If it is a home delivery, we can give it orally, or if it is in a labor room, we can give it rectally. So sublingually also it is very effective. The advantage of misoprostol is it has a prolonged effective period. Oxytocin acts very fast, but its short half-life is, duration of effectiveness is also less. Misoprostol is a prolonged effective period, so this is also a very good drug. So
if there is oxytocin, sometimes there is short supply of oxytocin in the labor room. In those cases, we can very safely give misoprostol 600 microgram tablet orally or sublingually or rectally. It is never given vaginally because the lochia will wash it out. So it can be given sublingually or rectally. So this is also a very effective drug. And it has also no contraindication almost. And the fourth drug is PGF2 alpha or prostaglandin injection, which is commonly used in postpartum hemorrhage. But we can also use it in active management 125 microgram IM. This is also a very, very effective drug. And the most important, PGF2 alpha is contraindicated in cases of bronchial asthma. So whenever a patient comes to the labor room, we have to take the history of bronchial asthma. जदि तार श्वास बेमारी अच्छी ताले प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन आदौ देबा नहीं कारण यह सिवियर ब्रोंकोस्पाज्म करथे. सो PGF2 अल्फा दबा कहले asthma हिस्ट्री सब बेले नब. जदि asthma हिस्ट्री अच्छी we should not give it because it causes severe bronchospasm and patient may develop respiratory failure. But prostaglandin is also, PGF2 alpha is also a prostaglandin is also a very effective drug. So these are the uterotonics which can be used in active management of third stage of labor. Kintu number one drug of choice is oxytocin. Jati oxytocin nahi, then second is your misoprostol is the safe drug. And जदि बेले बेले आसिले रास्ता रे भी बेले बेले डेलीवरी हो जाउची सेते बेले हम जदि एम्बुलेंस रे तीनटा टैबलेट हम खुआई दबा ताहले यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जीवो एंड वी कैन प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमोरेज. जदि घरे डेलीवरी हो गेला कि बाटर डेलीवरी हो गेला कि ऑक्सीटोसिन सप्लाई नाही सेकंड वी कैन यूज मिसोप्रोस्टल एंड मेथर्जिन कॉन्ट्राइंडिकेशन कहली प्रोस्टाग्लैंडिन भी कॉन्ट्राइंडिकेशन अछि. So all these four drugs can be used for the management of second stage. That's it, sir. So, as I told, oxytocin should be stored in the freezer and it is 15-25 degree. Methogen also has to be protected from light and in a cold chain. Prostaglandin also has to be taken, but the advantage of misoprostol is it has a long shelf life. It can be kept in the room temperature. So, this is also a very good drug. So, normally, आमे सब बेले 10 यूनिट ऑफ सिंटोसिनर डेलीवरी पर आईएम देई थाओ किंतु जो आगुरु एई अबिनारे में डिस्कशन करथिलो जदी आमे एक्सपेक्ट करछु कि पेशेंट रो पीपीएच हबार संभावना अछि हेई नै किंतु हेई पारे जेपर कि एनीमिया केस अछि किबा टू इन प्रेग्नेंसी अछि कि प्रोलॉन्ग लेबर अछि सेई केस रे आमे मिसोप्रोस्टल मध्य देई कि पीपीएच को प्रिवेंट कर पारे. बोथ वी कैन गिव ऑक्सीटोसिन एंड आल्सो मिसोप्रोस्टल. The second component is the delayed clamping and cutting of the umbilical cord. जहाँ कहली आगुरु थिला early clamping बर्तमान कहउछंती delayed clamping. तो केते बेले clamp करिवो? So the optimal time to clamp the umbilical cord for all infants regardless of gestational age and fetal weight is when the circulation in the cord has ceased and the cord is flat and pulseless, approximately 3 minutes or more. कॉर्ड टी को हमें डेरी रे क्लैम्प करिया द्वारा कोन हेई थाए ना बेबी टी को 80 to 100 ml एक्स्ट्रा ब्लड आसी परथाए सो दैट हमें एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड. सेति पई बर्तन कहउचंती कि कॉर्ड टा जति डिलीवरी हला परे इमीडिएटली कॉर्ड न काटी कि कॉर्ड सहित छुआटी को मार पेट ऊपर रखि देबा. जदि कॉर्ड लंबा अछि वी कैन आल्सो स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग आल्सो बिफोर कटिंग द कॉर्ड. तापरे कॉर्ड पल्सेशन बंद हला परे आमे कॉर्ड को काटिबा. ए द्वारा आमे छुआर एनीमिया को प्रिवेंट कर परबा. बट ओनली contraindication or only indication where we should go for early clamping and cutting is the asphyxiated baby. जदि छुआटी कांदुनी asphyxiated अछि ताहले आमे कॉर्ड पल्सेशन पई वेट न करी कि रिससिटेशन पई संगे संगे कॉर्ड काटी करी रिससिटेशन पई छुआ को नै जिबा. नहले आमे कॉर्ड पल्सेशन बंद हबा जाय अपेक्षा करि परिबा. एंड ए कॉर्ड पल्सेशन बंद छुआटा बाहर साला पर एपटे हमें ऑक्सीटोसिन दे देथिबा. It takes about 2 to 3 minutes oxytocin to act. So by that time we cut the cord, the placenta will also come out. So both way it will be beneficial to delay the cord clamping. The baby will be
get the extra blood, and also by the time we cut, the placenta will also be coming out. Then comes the most important, delivery of the placenta. So delivery of the placenta is done by controlled cord traction. Controlled or CCT jaha कहउछन, controlled cord traction. ताहले एटा ट्रैक्शन दबा आगरु आमे जानिबा, आमे श्योर हबा जे प्लासेंटा टा सेपरेट हेछि. जदि प्लासेंटा सेपरेट हेनी आमे कॉर्ड धरि की ट्रैक्शन देई देले ताहले कोन हबो ना, देयर विल बी इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस. इन्वर्जन ऑफ यूट्रस माने कोन ना, फंडस टा तळकु टाणी हे आसीबो. फंडस जदि टाणी हे आसीबो, यूट्रस रो फंडस रे हमर ओवरी लागिछि, तोन ता सहित ओवरी मध्ये टाणी हे जिवो. एंड ओवरी इज सप्लाइड बाय भागस नर्व व्हिच विल कॉज कार्डियक अरेस्ट. So patient will develop neurogenic shock if inversion occurs. सेतिपाई प्लासेंटा बाय डिलीवरी करबा आगरु कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन अप्लाई करबा आगरु आमे श्योर हबा जे प्लासेंटा सेपरेट हेछि. त आमे केमिति जानिबा, आमे डिलीवरी परे आमे ऑक्सीटोसिन देई सारिछु, तापर आमे देखिबा तार ऑक्सीटोसिन दबा आगरु भी आ गोटे कथा मन रखिए, सब बेले पेट ऊपर हाथ मारी देखि देबे जे सेकंड बेबी नाही. कारण बहुत समय देखा जाइछि अनडायग्नोस्ड ट्विन. That is also very important cause. Before giving uterotonics, we must exclude जे आहु गोटे छुआ रही जाय नै. कारण अवश्य एबे रूटीन अल्ट्रासाउंड हेला परे अनडायग्नोस्ड ट्विन इंसिडेंस बहुत कमी जायछि. तथापि जदि केबे आगरु आमे देखिछु इवन ओटी टेबुल पर मध्ये आमे ट्विन डिलीवरी न जानि की करिछु, तेनु ऑक्सीटोसिन दबा आगरु सब बेले सेकंड बेबी नाही बोली आमे एक्सक्लूड करबा. इफ देयर इज सेकंड बेबी, we have to withhold the uterotonics until second baby is delivered. सेही परी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करबा आगरु मध्ये हमें श्योर हबा जे प्लासेंटा सेपरेट हेछि. त प्लासेंटा सेपरेट हेछि बोली के पर जानिबा जे यूट्रस, once the placenta is separated, uterus will be firm, palatable and firm हेजिबो, palatable ना दी हलेले दी पटको हलिबो, palatable हबो. and placenta separate हला परे आसी कि लोअर सेगमेंट पाखरे रहि जिवो. तो डिलीवरी परे इमीडिएटली यूट्रस टा अम्बिलिकस पखरे थाए, हाइट ऑफ द यूट्रस. डिलीवरी हेला परे प्लासेंटा टा आसी लोअर सेगमेंट रहि जिवो. तो देयर विल बी सुप्राप्यूबिक बल्जिंग एंड हाइट ऑफ द यूट्रस विल इंक्रीज अ लिटिल. सो यूट्रस विल बी फर्म, palatable, height of the uterus will increase a little, and there will be suprapubic bulging, and there will be gush of blood will be coming from the vagina. ताहले and permanent lengthening of the cord. आपण मान जदी गोटे क्लैंप बसई थिबे सेटा जदी देखिबे तळको खसी आसला आ यूट्रस को ऊपर को उठेले मध्ये सेटा भीतर को जाउनी, ता माने जानले जे permanent lengthening हेची and placenta has separated. So once you are confirmed the placenta separate हे जाईची, तापरे हमें जाई कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन दबा. सब बेले मन रखे इट इज कंट्रोल. फुस की टाणी हेले इन्वर्जन हे जो पेशेंट शॉक को पळेबो. सोनु सब बेले कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन देबे. कंट्रोल केमती करिवे ना, बाँ हाथ टिपु आफ्टर क्लैंपिंग एंड कटिंग द कॉर्ड, clip as they keep slight tension on the cord and out for the contraction. Then gently बाँ हाथ रे suprapubically palm रे uterus टाको lift upward and backward, and डाहाण हाथ रे जदी स्पंज होल्डर बा कॉकस रे क्लैंप करचंती ताहले सेटा मिल्किंग करके bring the instrument closer to the perineum and give downward and forward traction on the placenta. ताहले आस्ते की प्लासेंटा बाहरी आसीबो. बाहरी आसला परे ताको दुई हाथ रे धरी रोटेट करी करी ताको डिलीवरी करिवे. एंड देन आस्ते आस्ते मेम्ब्रेन भी आसी जिवो. जदी मेम्ब्रेन छिंडी जाउतबो ताहले मेम्ब्रेन को स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स रे धरी ताको मध्ये रोटेट करी करी आस्ते की काढिबो. ताहले काढी सारला परे देखिबे जे द कंप्लीट प्लासेंटा हैज कम आउट. दैट वी हैव टू ऑब्जर्व. जदि प्रथम पुल आसला ताहले किछि समय छाड़ी देबा. कोई तो ब्लैडर फुल अच्छी कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करिनी, 2-3 मिनिट पर पुणी आउ थे ट्रैक्शन देबा. जदि ताधर भी नहला ताहले वी कैन वेट टिल 10 मिनिट्स. जदि 10 मिनिट भितर भी बाहरला नहीं एंड पेशेंट इज ब्लीडिंग, देन वी मे हैव टू introduce the hand inside and see whether placenta is inside the uterus or not, and we have to catch out of the placenta and take it out. जदि 15 मिनट पर मत बाहरला नहीं ताहले maybe it may be a adherent placenta, maybe morbid adherent, or that is trapping of the placenta, that we have to exclude.
तेणु आम सिंटोसिन आउरी देकी देखिबा ऑक्सीटोसिन दबा कैथेटराइजेशन करिबा जदि ब्लीडिंग होची इमीडिएटली नेकी मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा करबा को पड़ो तेणु दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्टेप सो बिफोर पुलिंग द कॉर्ड गिव कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन जदि बाँ हाथ रे यूट्रस को ऊपर को न ठेलिबे यूट्रस खसी पळे आसी इन्वर्शन करिवो एंड पेशेंट में गो इनटू न्यूरोजेनिक शॉक so we have to give control cord traction so this is the important step of the active management of third stage so next is uterine massage through abdomen immediately following delivery of the placenta every 15 minutes for first hour the golden hour as previously discussed this is the golden hour so this first hour we have to see every 15 minutes that uterus is contracted or not so that we can avoid the consequences like PPH, postpartum hemorrhage. So this is the fourth component of the active management of third stage of labor. So why this is important? This is important as I told the aim of the active management we can leave for expectant management but this is not practiced in each and every case we have to go for active management because postpartum hemorrhage is a leading cause of maternal mortality worldwide. It contributes about 25% of maternal death. And PPH may be traumatic or atonic. And by doing, and major cause of PPH is the atonic PPH, where the uterus is not contracting. And by doing this active management, we can make the uterus contract and prevent atonic PPH. So, it has been shown to be significantly reduce the incidence of PPH from uterine atony by 50%. So this reduces the need for costly medicines like prostaglandin, all those drugs, risky blood transfusion and its complications, and also it prevents complications related to if the patient develops PPH. Many complications, even if the patient survives, morbidity increases like your infection, puerperal sepsis, blood transfusion, your failing lactation, your long-term there may be CN syndrome. So all the complications of PPH may occur. So to prevent all those maternal mortality and morbidity, we have to go for active management of labor, third stage of labor in each and every case. So, as I told, to whom should you offer AMTSL? All mothers should be offered active management of third stage of labor by giving uterotonics, by delayed cord clamping, by control cord traction, and by uterine massage. And after immediate skin to skin contact with the infant after delivery and delayed cord clamping should be considered for every infant except in cases of asphyxiation where only cord clamping may be necessary to provide immediate resuscitative measures. So this is all about the active management of third stage of labor. So this is how you have to manage uterotonics, control cord traction, delayed cord clamping, and manage. So next I will go for episiotomy. So this is also very important. So in every cases, so coming to episiotomy. So episiotomy. So what is episiotomy? Episiotomy is surgical. आमे सबू केस रे देखु जो episiotomy होची मो लेबर में देखली बहुत केस रे सबू केस रे episiotomy होची एंड वर्तमान बहुत नुआ स्टाफ सिस्टर भी जॉइन करचंदी कोविड पे नुआ सिस्टर जॉइन करचन जो माने के से डिलीवरी गुडा करचंदी सो आई थॉट वी शुड आल्सो टीच देम हाउ टू डू where to do how to stitch the episiotomy so I selected this topic of episiotomy. So what is episiotomy? Episiotomy is a surgically planned incision. It is a planned incision on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor. So why? Because this is the most commonly performed operation in the obstetrics.
So what is the aim of doing an episiotomy? So aim is to enlarge the vaginal introitus, which will facilitate easy and safe delivery of the fetus. Particularly in a premature baby and also big baby, we have to do it, and it will cause stress on the fetal head will be less. And also previously thought that the overstretching and may cause rupture of the perineal muscles, which may lead to prolapse, but it is now controversial. But still then, to reduce the stress and strain on the fetal head, episiotomy is being done, particularly in premature babies. And the main objective is to enlarge the vaginal introitus. So what are the indications? So in elastic perineum. So as Vijay sir has already told, most cases of primary we are doing episiotomy, but it is not indicated in all cases of primary. If the perineum is elastic, it can be stressed, so no need to do episiotomy even if she is a primary. So this has to be kept in mind. Our aim should be not to do episiotomy in all cases, only when it is indicated it should be done. Similarly, anticipating perineal tear. So where do we anticipate perineal tear? If it is a big baby, if there is face to pelvis delivery, because a larger diameter will be coming through the introitus. Breech delivery, we have to manipulate for breech delivery, so we have to introduce your hand. So in those cases, to get more spacious, we have to go for episiotomy. Similarly, also shoulder dystocia. And when we are applying forceps or ventouse, we have to go episiotomy. So very important, when we are applying forceps, remember, when we are thinking about applying forceps, first you apply the forceps blade and see that the blades are being locked. After locking of the blade, then only you do the episiotomy. If otherwise, we will first do the episiotomy and then we'll apply the blade. The blade may not be locked, it may not be fitted, so there may be forceps of the failure. Otherwise, even if it is locked, while applying the forceps blade, we may tear the apex of the episiotomy may extend up to the vault, which is very difficult to repair. So never do episiotomy before applying the forceps. So first apply the forceps blade, make sure that it is locked and correctly applied, then only you do the episiotomy. Nale extension hejiba apex ta, and it will be very difficult to repair, you will not get the apex. Similarly with ventouse also, ame bele bele ventouse ta tike upurku head thiba apply kar dochu, setebele jodi aga episiotomy kar debu tahale tike thick hejiba, so seta bi kariya padibo. Similarly, previous perineal surgery. If there is pelvic floor repair or perineal reconstructive surgery, we have to go for episiotomy, otherwise there will be tears because there will be fibrosis, and if you don't do episiotomy, there will be tear and laceration which will be difficult to repair. So most common indication threatened perineal injury, particularly in primary, rigid perineum, forceps, breech, occiput posterior position, or face delivery. So sir जहाँ कहले बर्तन विजय सर जहाँ कहले टाइमिंग ऑफ द एपिसोटोमी बहुत इंपोर्टेंट. सो केतेबेले करिवो when bulging thinned perineum पूरा thinned हे जाइथिबो during contraction, very important, during contraction. If you will do it during relaxation, you have to cut much more tissue and it will be difficult to repair. And just prior to crowning, what is crowning? Crowning means the weight will not recede even after the contraction is over. So crowning habara just aguru, when the perineum is thinned out and when the head is about 3 to 4 centimeters visible, then only you do the episiotomy. That if it is done early, what will happen? If you done early, perineum will be thick. We have to cut a much more amount of tissue. So it will be bleeding will be more. So don't do episiotomy very early before crowning. And if it is done late, what will happen? If it is done too late, sometimes it will be difficult to introduce your finger to beat the incision. And also if it is done too late, it will fail to prevent the invisible lacerations of the perineal body, which prevents prolapse. So
Timing of the episiotomy is very important. It should be done bulging thinned perineum during contraction just prior to crowning. And during forceps delivery, it is made after the application of blades. So this is the picture of the episiotomy. So advantages of episiotomy is a clear and controlled incision is easy to repair and heals better. It is better than a जदि तमे न करिवो सेटा छिंडिकिना laceration हबो, it will be difficult to stitch. So what a clear incision पाइले हमें repair करले सहज हबो, and it reduces the second stage and it reduces the trauma to the muscle. Similarly, in fetal, it minimizes the intracranial injury, especially in premature babies. Premature baby रे जदि बहुत समय मुंडटा अटकी रही जिवो ताहेले cerebral hemorrhage हबार chance अछि, and it is better in premature baby if you can apply forceps. Forceps also act as a protective cage for the head of a premature baby. So in those cases, we have to do an episiotomy. तो ब्रिज रे मध्य हमर आफ्टर कमिंग हेड पई मैनिपुलेशन करया पई हमको एपिसियोटोमी पड़े. So what are the types? Mainly we use the mediolateral episiotomy. So what is mediolateral episiotomy? The incision is made downwards and outwards from the midpoint of the forceps. That is very important, midpoint of the forceps, either to the left or to the right, and it is directed diagonally straight line which runs about 2.5 cm away from the anus. Make sure that it is turned 2.5 cm away from the anus. Otherwise, if it is closer to the anus, there will be very painful during defecation post delivery. So it should be 2.5 cm away from the anus, and this will be, we can better if it is done in a thinned out perineum. So mostly we do mediolateral. Second is a median. Sometimes median can be done if it is a small incision. Episiotomy can do if it median. In here, the incision commences from the center of the forceps and extends posteriorly along the midline about 2.5 centimeter. That to adhika ame गरिबा जदि तारे rectum will be involved. So this method is also not practiced normally. Episiotomy. Third is your lateral. So lateral incision is never used because the incision starts from about 1 centimeter away from the center of the forceps and extends laterally. Eta kahaiki use kara jayeni karana it has got many drawbacks, including chance of injury to Bartholin's duct. So it is totally condemned. Sethipainka we make it a point when you do the incision, you start from the midpoint. If you go laterally, you start from higher up, then there is chance of injuring the Bartholin duct, which is Bartholin gland is a very important one which causes lubrication of the vagina. If you cut that, there may lead to Bartholin abscess, Bartholin cyst, and dryness of the vagina. So always सबुबले forceps रा midpoint, मध्य point ru आरंभ करिवो. J-separate is never done. So as I told, the merits of the median episiotomy. Median episiotomy बहुत merit अच्छी, किंतु single demerits में it is usually not practiced. कौन merit? The muscles are not cut, blood loss बहुत कम, pain भी कम, repair is easy, wound is rare. किंतु एटा जदि rectum को involve कर देबो बहुत असुविधा हो, and if it is rectum involved, it is not properly stitched, patient may develop your incontinence of feces or rectovaginal fistula. That's why median episiotomy also not advocated. Then सबुबेले आमे mediolateral episiotomy ही करिबा. सेतरे कोन हबो, it is merited, it is relatively safe, and जदि दरकार पडिबो आमे हाको extension करि परिबा without hampering anything. So if necessary, it can be extended. But the drawback है एथले टिके अधिका bleeding हेता है, टिके painful हेता है, बेले बेले सिलाई भी खुली जाइता है, सेत पई का टिके drawbacks रहि जे. Still then mediolateral is the preferred one. So this is the median one, this is your mediolateral and the J-sept. So
केमिति करिवो step, what are the steps of doing. So very important, women's informed consent is essential for episiotomy. Also you have to take the consent of the patient, ताको कहवा पड़िवो जे मु तमरा गोटे episiotomy or incision दबा को जाउची. Nowadays in the period of respectful maternal care, everything we do we have to take the consent of the patient. That is very important. Informed consent is very important nowadays, and we should follow that. So preliminaries. So asepsis, the number one factor. Every operation you have to maintain the sepsis. So the perineum should be thoroughly swabbed with povidone iodine lotion and should be properly draped. This is very important. Aseptic measures should be always maintained. And local anesthesia. Many times local anesthesia is not being given, but ideally every case local anesthesia of 10 ml of 1% solution of lignocaine should be given. Otherwise it will be very painful. So local anesthesia, lignocaine should be given, and ideally whenever we are giving lignocaine, we must do a skin test. Sometimes it may cause hypersensitivity reaction. So local anesthesia should be given. So these are the steps. Everybody know how to do an episiotomy. 2 fingers are placed in the vagina between the presenting part and the postovaginal wall. The incision is made by curved or straight, blunt pointed sharp scissor. 1 blade of which is placed inside in between the fingers and the postovaginal wall, and the other on the skin. The incision should be made at the height of the uterine contraction. That is very important. When during the contraction, if you do, you will cut less tissue. So, and you will have an accurate idea of the extent of the incision can be better judged from the stressed perineum. So during contraction, do the episiotomy. And deliberate cut should be made starting from the center of the fourchette, extending laterally either left or right. And it is directed diagonally in a straight line which runs about 2.5 centimeter away from the anus. The incision ought to be adequate. If you do a small incision, the purpose will not be done. So adequate incision should be made. And the bleeding is usually not sufficient to use artery forceps unless operation is done too early or the perineum is thick. Jodi shighra kardaba besi bleeding haba, you have to, and it will be a lead to PPH. So bleeding from the episiotomy is also a type of PPH, a traumatic PPH. So don't add to the bleeding to our anemic patients. So do episiotomy thick time re kariba, stressed out perineum, thinned out perineum, you do the episiotomy. So the xylocaine is given and the episiotomy starting from the midpoint, episiotomy is being done. आमार एतरे कौन स्ट्रक्चर कटा होची, the postovaginal wall, the superficial and deep transverse muscles, bulbous spongiosum and part of the levator ani, the fascia covering those muscles, transverse perineal branches of duodenal vessels and nerves, subcutaneous tissue and skin. So this is the picture of the episiotomy. You see the apex of the cut. This is very important. While stitching the episiotomy, you have to go beyond the apex. So you must always see the apex. That is very important. So these are the pictures showing what are the structures cut in the median. In the median episiotomy, we have to cut the least amount of tissue. So that is a bit good. If it is small episiotomy is done, we can go for median, but because the least amount of tissue is being cut. But the ideal is the mediolateral. So timing of repair. So when it will be repaired, this is also very important. Like the time of incision, time of repair is also very important. So repair is done soon after expulsion of the placenta. So after expulsion, after active management of third stage of labor, then only we do the repair. So if the repair is done prior to that, so disruption of the wound is inevitable. Subsequent manual removal जदि दरकार पड़िबो ताले एपिसियोटोमी टा छिंडी जिवो. सेति पई प्लासेंटा बाहर सारला परे एपिसियोटोमी स्टिच करिवो.
and ତା ବୋଲି placenta ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଯଦି episiotomy ରୁ bleeding ହଉଥିବ ଆମେ will allow the blood to blood loss? Will not. So how will you control that blood? You can take a sterile pack and you can press it. So by pressing also, if we can control the bleeding blood loss from the episiotomy wound. And if there is sprouting vessels, we have to hold it with the artery forceps. So control the bleeding, don't allow the blood loss from the episiotomy by giving a gauze swab or pack. And if there is sprouting vessels, catch hold it by a artery forceps. Don't allow the blood loss, because minimal blood loss is all. That blood loss is also very important to our patients who are usually anemic. So don't allow the blood. So early repair prevents and quick repair sepsis and eliminates the patient's prolonged apprehension. Patient be डर की जो सुबह शीघ्र सार देले, it will be good. So put the patient in lithotomy position. Put a good light source should be there so that it will be clearly visible. Clean with antiseptic solution. If there is blood clots, remove it from the vagina and the wound area, and put a sterile towel below the perineum so that your suture material and all these things will not come in contact with the rusted table. That is very important. Put a sterile towel or your drape sheet is available. Everything is available nowadays, so it should be placed below the perineum and then suture should be started. And if the repair field is obscured by oozing of blood from above, if there is bleeding coming and obscuring, we can give a vaginal pack, maybe inserted, and is placed higher. But this is very important. If you have given a vaginal pack, make it a point to remove it. Sometimes while new residents join in the medical college, as I have seen, they usually give a pack and they forget to remove it. This is a very untoward position, because the pack will remain there and their locia will be coming and it will cause toxic shock syndrome, and after 10 to 15 days, the patient will come in usually as septic shock almost, and if you remove it, it will be so foul smelling, even you cannot stand near that. So if you have given a vaginal pack, make it a point to remove it. So how the repair is done? It is done in 3 layers. Most important, कौन करिवो? Perfect hemostasis. जब bleeder अच्छी, you have to see that bleeding is not there. Obliterate the dead space. Dead space केते बड़ा अधिक है वो? जब हमें बहुत जल्दी एपिसियोटोमी कर देइचु, बहुत टिश्यू काटिचु, then we have to dead space ता रही जीवो, ताकू हमें double layer सिले करे बेले बेले दरकार पड़ता है. So make it a point to obliterate the dead space. नहले ता भितरे ब्लड उजिंग हे जमा है कि हलबल हेमाटोमा करिवो. तेनु डेड स्पेस ओब्लिटरेट करिवो. And too tight suture without tension. जदि बहुत टाइट कर देबा, it will be very painful, it will be edematous and it may give way. Scar dehiscence हे जीवो. Don't make too tight suture. So the repair is done in following order. First the vaginal mucosa, then the perineal muscles, lastly skin and subcutaneous tissue. So this is the episiotomy. You see the apex. The first is the vaginal mucosa is repaired. This is very important. You have to go at the apex or go little beyond the apex. That is very, very important. If you don't stitch the apex, blood will trickle into it and it will cause also vulval hematoma. And sometimes what happens, if it is a big episiotomy or it has extended due to some reason, you may not be able to get the apex. बेले बेले apex टा देखा जाएनी. सेते बेले कौन करिवो? हम तो छाड़ी परियन apex टा को. सेते बेले कौन करिवो? You ask assistant नहीं कि कुटे speculum दे कि ताको anterovaginal retract करिया कोइवो, so that you may see the apex. नहले तादर भी जदि देखा न गला, कौन करिवो? जोटा भी last देखा जाउची, you give a stitch there and keep a long thread. सेटा को ट्रैक्शन करी देकी आमे ओपरु को जिबा. तेणु जदि apex देखा जाउ नाही, you have to stitch whichever is visible and by giving traction आमे ऊपर को जाई apex जाई सिलाई मारी परिबा. तापरे तळ सिलाई मारिबा. So this is very important. apex जदि देखा जाउ नाही, आउ जन को असिस्टेंट भाबरे नै कि आमे स्पेकुलम दे कि रिट्रैक्ट करबा anterovaginal wall, search for the apex,
तथापि भी जदि देखा जाए नहीं, you start below and then go upward till the apex is reached. Then you stitch it there, then again you come back and stitch from below. This is very, very important. Don't leave the apex unstitched anytime. जदि मसल जदि बहुत थिक कटि जाइछि, आमे यूजुअली सिंगल लेयर दउछु. जदि बहुत थिक अछि, डेड स्पेस रहि जिवो, we can give in 2 layers also. And while giving the muscle, if it is very thick and dead space is remaining and you are giving deep bite, ताले कौन करो, assistant को कहबो to put her fingers rectally. Make sure that you are not taking the rectal mucosa in your stitch. This is very important, because if you take the rectal mucosa, patient will develop rectovaginal fistula, and after second week the stool will come out through the vagina while defecating. This is a very painful condition and also difficult to repair. So make it a point while taking the deeper tissue. If you are not able to put a finger in the rectum, you can take an assistant and ask her to put the finger in the rectum and ensure that you are not taking the rectal mucosa. And make it a point, whenever taking a bite, both side bite in a single stage don't take. Take it the needle in the middle, then I go for the other side. गोटे पट सिले मसल मारला गोटे साइड रो, तापर मझिरे काढिबो, पुनी आर पट मसल मारिबो, ताहले मझिरे आ रेक्टल टिश्यूटा जीवो नै. And rectum is very close, nearby. So the vaginal mucosa is sutured first. The first suture is placed at or just above the apex of the tear. Thereafter, the vaginal wall are opposed by interrupted. Ideally, vaginal suture ta interrupted daba katha, but commonly we are giving a continuous suture. Can interrupted dele, the anatomy of the vaginal mucosa is better maintained. Continuous dele, take a puckering of the vaginal wall occurs. Both can be given. Care should be taken not to injure the rectum. So post-operative care. So after doing the episiotomy, I have not written, make it a point. You have done the episiotomy repair in 3 layers, the mucosa, the muscle, the skin. After that, you do a PV examination to rule out any vaginal pack, and you also do a per rectal examination to rule out that you have not taken any rectal mucosa in your stitch. If you feel the suture material in your per rectal examination, open the stitch and cut it and again repair it. This is very important. This small habit will prevent rectovaginal fistula in the patient. And also sometimes PR and PB is a must. It make it a habit to do it, so that it can prevent these complications. So post-operatively, dressing should be done. Ideally, you should ask the patient to take a bath after delivery, and they can apply the soap in the dressing area and keep it dry. And they should usually sit, keeping their legs opposed. Don't allow them to chakamali poke basile. There may be some tension. So rather, they should keep the legs opposed. That is better. The early ambulation should be done. Stitches, we are not giving non-observable. No need to remove the stitch. So next comes your, what are the complications? So number 1 complication, extension of the incision, which is very important. Extension, if you have not done the adequate, if you have not cut adequately, there will be extension, and extension quite a madijibo. It may involve the anal sphincter or the rectal rectum. That the anal sphincter is a circular muscle, with tear hegela, there will be incontinence of feces. Stool bharibo. So this is also a very bad complication. So if you have extended, you must diagnose it. That is very important. How you diagnose it? If you ask the patient to contract, if you put a finger in the rectum and ask the patient to contract, if the anal sphincter is involved, she will not be able to contract it. And you can also see that the torn ends of the sphincter muscles on either side. Chindi jaithiwa, dipatuku pole jaithiwa. You can hold it with 2 Alice forceps and oppose it and give a figure 8 stitch. Sphincter tear heitile. As the rectum tear heitile, you can know it by
doing the peer examination. In that case, yeah, you must call your seniors and do a proper surgery. The rectal mucosa should be stitched fast, so that after that you have to repair the episiotomy. So that is a very important complications of immediate complication of episiotomy. Then severe hemorrhage. Severe hemorrhage means, as we know the definition of PPH, even small amount of hemorrhage, it will be PPH for a patient who is anemic. So every bleeding, if it is done too early, that extra bleeding will be PPH for her. So you must control it, as I told before, by giving pressure, back pressure, or by holding the artery forceps. That should be controlled. Otherwise, it will cause untoward effects. Next, your vulval hematoma. So vulval hematoma, this is also very important complication. One must know how to diagnose it and how to manage it. So if you have done an episiotomy, and the patient after 10 to 15 minutes complains that she is having severe pain, pain will be occur, but if complaint of severe pain, throbbing pain in the perineum, then you must go nearby and inspect the episiotomy. If even if even if there will be a swelling, usually there will be a swelling of the episiotomy wound will be there, and if you will examine the patient will be tachycardia will be there, patient will be more pale, patient will be very pale. So, and even if sometimes it may not be visible to outside, but if you do a PV examination, you can get a swelling inside the vagina. So this is very important to diagnose vulval hematoma. Otherwise, patient may go into shock. So once vulval hematoma is diagnosed, what you will do? You just cut all the stitches and search for the bleeding vessels. If you can lucky to get the bleeder, then tie it up. But many times the bleeder is not visible. So in those cases, what you will do? You will go for omit the dead space, give a drain and close it. So vulval hematoma is also one complication. And if sometimes a small hematoma may occur, if it is less than 5 centimeter and it is not increasing, you can go for conservative management. But if it is a big one, you have to open it, otherwise patient may go into shock. Second is the infection. So infection will come later on. There will be throbbing pain, rise of temperature, the wound will look moist, red, swollen, and there will be effusive discharge. So in those cases, pus is there, you may have to cut it, you have to change the antibiotic. So wound infection can also occur, and if there is infection, it will lead to wound dehiscence. So if there is wound dehiscence in the episiotomy, what we will do? We will not stitch it because it will heal by secondary intention. So episiotomy wound gapping, if it is there, you just don't stitch it. Give some local ointment, do the daily dressing, and ask her to take a soap bath every day, and it will automatically heal by secondary intention. So this is a picture of a vulval hematoma. Drain has been given. It has been drained and a drain has been given. So always try to prevent it. So by taking the apical stitch, proper hemostasis maintain, omitting dead space, ଆମେ ताले एइटाको avoid कर परिबा hematoma. And this is very painful also. So what are the remote complication? Remote complication आमे यदि बहुत टाइट करी स्टिच कर देथिवा, यूजुअली आमे स्टिच कर कोन म्यूकोसा स्टिच कला को आमे दी पट हाइमेन को हाइमेन जोड़िबो, ताले एनाटॉमी विल बी मेंटेन, स्किन पाखरे आमे सारिबो. If you go beyond too high up, and there will be the tightening of the vagina occurs, there will be dyspareunia. So see that 2 fingers can be easily inserted after the episiotomy to prevent dyspareunia. And there is chance of perineal lacerations in the subsequent labor, and there is chance of scar endometriosis, which is very rare. But what happens in scar endometriosis, patient will complain that she is having pain in the episiotomy area during every menstrual period. So cyclical pain in the perineal area will indicate it is a scar endometriosis. Though it is rare, this can happen. So in those cases, you have to go for surgery to contain. So as we discussed, though episiotomy is, we think it is very easy operation, very common, but episiotomy are painful.
It is risky. Don't think that episiotomy is not risky. As we discussed, can cause so many complications. So it should not be routinely recommended. If it is, don't think that episiotomy न कले भाविए जे delivery किछि कलेनी सेतबे हम गोटे episiotomy कले भाविए जे हां किछि गोटे कले. No, if it is not indicated, don't do it. You have to be very careful because it has many complications. So WHO recommendation 2018. So routine or liberal use of episiotomy is not recommended for women undergoing spontaneous vaginal birth. Selective or restrictive use of episiotomy should be practiced. So make it a point to be selective and do proper assessment where should be done. Don't practice it routinely. So acceptable rate of episiotomy is difficult to ascertain, but WHO recommends episiotomy rate of 10% for normal deliveries. So 100 delivery 10 episiotomy करिया पे WHO recommend କରୁଛି. So coming to the end of my topic, so take home says restrict routine episiotomy, maintain proper aseptic measures. Every case after episiotomy stitch, do a PV examination to take out a forgotten vaginal bag and do a peer examination to rule out if you have taken any rectal mucosa. So this is very important. Thank you. So by doing a proper active management of third stage of labor, by managing the episiotomy properly, we should give a positive childbirth experience to the mother, which should be our aim. Thank you. Thank you, madam. Thank you so much for your excellent presentation and very clearly and lucidly explaining all the points. There are some questions in that chat box. We will take those questions after the session on neonatal jaundice by Dr. Tanushri. So, madam, take a question guda ko dekhi nahi thibe. Once next presentation hegala pore, we will have an open session for question answers. Therein we can discuss and we can also invite other experts to give their opinions. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. If you can, ma'am, please stop sharing. May I now request Dr. Tanushri to kindly give her presentation. Okay, thank you, madam, for giving me the chance. Can I share my screen? Yes, please. Yes, please. Go ahead. Okay. Is it visible? Is my screen is visible? Yes, yes, it's visible. Okay. Yes. Okay, just let me check. Not yet. Not yet visible, ma'am. Okay, I can then better if you can share, I will present from my side. Somebody else. Shipra? Yes, ma'am, I'm sharing. Just a second. Thank you. Is it visible, ma'am? Dr. Tanushri, is it visible? No, no. You have opened Dr. Sasmitha's presentation. Okay, so sorry, so sorry. I don't have a presentation, I guess. I'm sharing. I'm sharing. Yes, Ashutosh, please go. Dr. Tanushri, you can start speaking by the time. Yeah. Oh, very good afternoon to all. After a very brainstorming session by Madam, I shall be taking you totally a different field, but that is also very important for all staffs in the SNCU. And that is an important topic in neonatology that I will be discussing on neonatal jaundice.
because I will try to make it as crisp, as as easy to understand as possible. So, and I will make it more practically oriented. So let us start with the topic proper. Yes, now it is visible actually. So we all know that neonatal jaundice is a important topic from neonatology point of view. Generally amara je konosi jagare nursery jouthi SNCUs achi seti jette babies admit huanti tadaru majority cause of admission in SNCU re thae neonatal jaundice and followed by neonatal sepsis. These are the two most important cause for readmission of babies from home. Okay, can we go to next slide? It's not visible now actually. Ma'am, there is some network issue, I guess. Please continue your thing. I'll just download your slide again, okay? Okay, okay. So let me try. Is it visible now? I am also trying. Yes, yes, now visible. Visible. Okay. Yeah, I think so. It is visible. Yes, ma'am. We can see. I hope you can see that. Please go ahead. Yeah, you can see, na? Yes, yes, yes. Please go ahead. So our learning object by the end of this topic, by this end of this discussion, आमे जानी परिवा जे incidence आमर jaundice रो केते incidence रहे newborn मानकर and काई की jaundice हुए छोट छुआ मानकु and केमती आमे clinically what are the methods for assessing clinically jaundice and what is the difference between physiological pathological jaundice सेटा बहुत important अछि काना सबु jaundice को treatment करिवा दरकार पड़ेनी ଆଉ majority most common cause of jaundice कौन थाए आमे कौन investigations करि परिबा और केमती management करि परिबा and some of the myths and facts that is very important कते जोड़ा को भूल धारणा jaundice ऊपर थाए both healthcare giver करो parents करो and as well as relative मान करो I will try to correct them as much as possible. Okay, so coming to next slide. Incidence jaundice is very common that happens due to yellow discoloration of skin and sclera. Our most common cause of morbidity one of the most common cause of morbidity in neonates admitted to SNCU. Our totally देखा जाइए जे term baby जत्ते term baby deliver हुआंती तादरू around 60% term babies करो 80% preterm babies करो किछि मात्रा रे jaundice थाए but समस्त को phototherapy दरकार पड़ेनी. Generally even not only yearly time of delivery after in at 1 month also around 10% breastfeed infant karo jaundice rahi pare in 1 month of age. Major problem कौन था jaundice रे it seems it is very माने फर्स्ट स्टेप रे एटा लागु जे 60% टर्म बेबी कर हुए जॉन्डिस आमे तांको समस्त को ट्रीटमेंट करिया को दरकार पड़े पारेनी किंतु जति जन को ट्रीटमेंट करिया को दरकार पड़े से मानन को जदी आमे प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट न करिवा स्पेशली तार कॉज जदी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अछि ताले दैट माइट कॉज न्यूरोलॉजिकल डैमेज इन some of the severe cases. That is why it is important to treat neonatal jaundice. टिके आमे पैथोफिजियोलॉजी काहे की जॉन्डिस हुए न्यूबॉर्न मानकु काहे की हुए एडल्ट रे जॉन्डिस एते कॉमन काहे की नाही सेति विषय रे आमे टिके पैथोफिजियोलॉजी जानिबा को चाहबा जॉन्डिस रो मेजर और जॉन्डिस इज बेसिकली किछ नाही दैट इज बिकॉज ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑफ आरबीसीज डिस्ट्रक्शन और हेम प्रोटीन कैटाबॉलिज्म और बोन मैरो एरिथ्रोपोइसिस ये सब तीनटा जांक प्रोसेस रे अल्टीमेटली bilirubin is created. That bilirubin binds. The previous slide. Yes. This is not turning with the talk. Oh. Yeah, which side you are able to see, sir? Physiological and pathological jaundice table. No, actually then she has, I am not presenting, maybe madam has presented, yes. Yes. Is this the slide? Okay. Yes. Yeah. I think my slide is not getting projected. That is projected by. Yes. Yeah. Yes, no it's issue. fine. Then now it is fine. Okay, madam. So I can tell you next slide. Then you can move it to next. That will be good. Sure. Yeah.
तो आम जमी डिस्कस करूले मोस्टली बिलिरुबिन द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन इज रेड सेल जो नॉर्मली आम रक्त कणिका थाए रेड सेल है बोन मैरो रे एरिथ्रोपोएसिस होची कि हेम प्रोटीन जे इतिटा काटाबोलिज्म होची दिस थ्री विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन से बिलिरुबिन टा गोटे एल्बुमिन वाली प्रोटीन अच्छी आमर ब्लड रे सेइथरे बाइंड करे दैट इज नोन एज अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन धीरे धीरे सेटा लिवर को जाए लिवर रे लाइगैंडिन करके गोटे प्रोटीन अच्छी सेथरे संगे बाइंड हैला परे से कंजुगेट हो जाए कंजुगेट हेकी दैट विल गेट सिक्रेटेड इन बाइल बाइल रे सिक्रेट हेकी इंटेस्टाइन को आसे इंटेस्टाइन रे जनरली क्या हम अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड बिलिरुबिन विल गेट एक्सक्रीटेड बाय स्टूल बट इफ इट इज अनकंजुगेटेड बिकॉज बिलिरुबिन एठी हमर इंटेस्टाइन रे केते गुडा बैक्टीरिया थांती जोटा अगेन कंजुगेटेड बिलिरुबिन को अनकंजुगेटेड रे कन्वर्ट कर दियंती और इफ इट इज अनकंजुगेटेड अगेन इट विल गेट अब्जॉर्ब्ड अगेन इट विल गो इन द सेम प्रोसेस तो मु एटा कहि कि प्रोसेस टा कहली आई विल नाउ टेल व्हाई न्यूनेट्स आर मोर प्रोन टू हैव बिलिरुबिन जॉन्डिस देखंतु गोटे जिंस होची न्यूबॉर्न रो आरबीसी प्रोडक्शन इज मोर आमर नॉर्मल एडल्ट पीसीबी पैक सेल हेमोग्लोबिन इज अराउंड 15 थाए जेतेबेले कि आमर न्यूबॉर्न रो हेमोग्लोबिन विल बी अराउंड 17-18 ग्राम्स तो तांकर एरिथ्रोपोएसिस बेसी थाए आउ आरबीसी प्रोडक्शन बेसी हुए ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन भी बेसी हबो सेकंड न्यूबॉर्न रो आरबीसी रो लाइफ स्पान इज आल्सो लेस जेमती एडल्ट रो लाइफ स्पान आरबीसी रो लाइफ स्पान 3 मंथ्स 4 मंथ्स थाए आमर नियोनेट्स मानकर आरबीसी रो लाइफ स्पान इज अराउंड 70 डेज टू 90 डेज थर्ड प्रॉब्लम नियोनेट्स रे जते फीडिंग एस्टाब्लिश हेई न थाए तो आपनकर जीआई सर्कुलेशन इज आल्सो नॉट एस्टाब्लिश्ड इंटेस्टाइन रे आपनकर जो बिलिरुबिन ता आसे कंजुगेटेड बिलिरुबिन सेटा बहुत समय स्टासिस हेकी रही जाए स्टासिस हेकी रहिला माने बैक्टीरिया गट बैक्टीरिया पई ताको बेसी समय एक्सपोज हुए ऑब्वियसली गट बैक्टीरिया रे एक्सपोज हेले दैट विल अगेन डीकंजुगेटेड एंड डीकंजुगेटेड बिलिरुबिन विल अगेन एंटर into the hepatic circulation that is known as enterohepatic circulation so ei tinta problem jogru and sometimes in premature babies this conjugation protein is like ligandin as well as albumin these are also less in amount so that will also cause your unconjugated bilirubin hyperbilirubinemia ei tin charta factor jota कहली that is the reason why preterm neonates as well as term neonates are more prone to have hyperbilirubinemia as compared to आमर adult मानक comparison रे next slide whenever we are discussing hyperbilirubinemia or jaundice हमको ए जिनस हमको differentiate करबा दरकार अछि whether it is physiological jaundice or pathological jaundice एटा important काहे कि ना बेसिकली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो थरे सेथरे हमको ट्रीटमेंट करबा को दरकार पड़ेनी बेबीज को आ से मानकर ऑनसेट टिपिकली हुए 24 आवर्स परे से माने स्लो दैट प्रोग्रेसेस वेरी स्लोली धीरे धीरे राइज करके पीक हुए डे 3 रु डे 5 and that peak value will never rise more than 12 to 15 mg in term neonates. In preterm that can be rising slowly even and reaches peak by day 3 to day 7 और धीरे धीरे fall करके 2 weeks परे धीरे धीरे fall करके कमी जाए किंतु एटा मन रखिया दरकार ए बिलिरुबिन केबे भी 24 आवर्स से पूर्वरु आसे नहीं और केबे भी वैल्यूज विल नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 15 mg पर डेसीलिटर आ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जदी देखिबा सेटर ट्रीटमेंट करबा निहाती दरकार हम हाउ विल नो केमती जानिबा हमें जॉन्डिस जेतले प्रथम दिन रे आसुची और राइज इज मोर रेट ऑफ राइज इज मोर देन 0.5 mg पर आवर और ग्रॉसली 5 मिलीग्राम पर डे रे जदी बढ़ुची आपण गोटे दिन बिलिरुबिन करचंती को बेबी रो सेरम बिलिरुबिन जदी 10 मिलीग्राम अच्छी नेक्स्ट डे रे 16 मिलीग्राम हे गला दैट आपण को गोटे क्लू मिल जाउची जे एटा मोस्टली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नुवा एटा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एनी बेबी हैविंग एनी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट जॉन्डिस जोटा आपन को आखिरे देखा जाउची आ 14 डेज रो ऊपर हे गलानी आपन सेतरे सस्पेक्ट करिवे कि एटा मोस्ट लाइकली पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अछि तार किछि अंडरलाइन कॉज अछि हम ताको इवैल्यूएट करियक पड़िबो स्पेशली टर्म बेबीज रे और प्री टर्म बेबीज रे जॉन्डिस कैन हम ऑलरेडी आपन कहितले जॉन्डिस टिके लॉन्गर ड्यूरेशन पई फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी परसिस्ट करि पारे सेति पई आपन 3 वीक्स जाके अपेक्षा करि परिबे आउ कौन सी बेबी रो जॉन्डिस संगे जदी न्यूरोलॉजिकल डैमेज रो सिम्पटम्स अछि बाइंड इज बिलिरुबिन इंड्यूस न्यूरोलॉजिकल डैमेज रो सिम्पटम माने सीजर होउची छुआटर श्रील क्राई अछि
कि क्रांकी वॉइस अच्छी एंड ऑपिस्थोटोनस पोस्चर अच्छी से सब क्षेत्र रे दैट मीन्स दैट जॉन्डिस इज कॉजिंग ब्रेन डैमेज दैट इज ऑब्वियसली ऑलवेज ए पैथोलॉजिकल एंड सीरियस इश्यू. नेक्स्ट स्लाइड मैडम. गोटे जितेबाला आप एसएनसीयू रे देखुंती ड्यूटी रे अच्छी एज ए रेसिडेंट और ए स्टाफ नर्स कौन बेबी जदि आप प्रथम दिन एडमिट है कि डिस्चार्ज पूर्व जॉन्डिस विषय आप जितेबाला कौन बेबी को जॉन्डिस सहित देखिए हाउ यूल अप्रोच केमती अप्रोच करेंगे यही 5-6टा क्वेश्चन को आंसर करने को चेष्टा करेंगे. प्रथम है जेस्टेशन. व्हाट इज द जेस्टेशन 35 वीक्स रे तले अच्छी तार मैनेजमेंट पॉलिसी प्रोटोकॉल डिफरेंट 35 वीक्स रे ऊपर अच्छी तार मैनेजमेंट पॉलिसी इज डिफरेंट. सेकंड इज बर्थ वेट. बर्थ वेट रे आपन को मु पछ स्लाइड गुडा को देखिबी जेस्टेशन परे आमे बर्थ वेट टा देखु सेटा से हिसाब रे आमे प्रीटर्म छुआ जो मानकर जेस्टेशन 35 वीक्स रे तळे अछि तार केमती जॉन्डिस पई फोटोथेरापी दबा केते मिलीग्राम रे आमे फोटोथेरापी स्टार्ट करिबा केते मिलीग्राम जॉन्डिस हेले आमे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन को जीवा से जिंसडा डिसाइड करिया पई बर्थ वेट भी दरकार पड़े. थर्ड इज पोस्टनाटल एज. पोस्टनाटल एज आमे एटा देखंती तेतबेले 72 आवर्स माने 3 डेज कंप्लीट हे नाही सेतबेले आमे जॉन्डिस आमे काउंट करंती केते आवर्स ऑफ लाइफ टिल 72 आवर्स वी काउंट एज आवर्स ऑफ लाइफ. फॉर एपी चार्ट अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स रो जॉन्डिस चार्ट जोटा कि यूनिवर्सली सब जगह यूज हुए फॉर डिसाइडिंग गिविंग फोटोथेरापी और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सेति पई आमे 120 आवर्स माने 5 डेज 5 दिन पई आमे जॉन्डिस टा को आवर्स ऑफ लाइफ रे कैलकुलेट करंती बेबीज पई हैला. फोर्थ पॉइंट आपण कोन देखिबे बेबी को जॉन्डिस पई इवैल्यूएट करिवार दरकार अछि कि नाही माने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अछि कि आमे ताको इन्वेस्टिगेट करिवा दरकार कि नाही. फिफ्थ पॉइंट इज बेबी को फोटोथेरापी दरकार अच्छी ना नहीं मुझे डिटेल्स कहबी आपको केमती डिसाइड करेंगे कि को बेबी को जॉन्डिस रे किछि करिवे नाही को बेबी रो फोटोथेरापी स्टार्ट करेंगे को बेबी रो आउरी सीरियस जॉन्डिस अच्छी जोटा को एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इमिडिएटली दरकार. आउ गोटे जिनस होची जदी आउ गोटे जिनस सेटा मे बी आपण एते एते स्किल्ड न थाई पारंती सेति पई बट इट इज गुड इफ यू कुड नो दैट कि दिस बेबी इज हैविंग सम फीचर्स ऑफ एनकेफ्लोपैथी. जदि जानिले कोनस बेबी रा एनकेफ्लोपैथी जॉन्डिस संगरे अछि मुंड रे प्रॉब्लम अछि माने ब्रेन डैमेज रो सिम्पटम साइंस आसुची ताले से बेबी को बेस्ट हबो आपण जेते शीघ्र तार फोटोथेरापी स्टार्ट करी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन रो रिक्विजिशन ब्लड बैंक संगरे कथा है कि अर्जेंट बेसिस रे अरेंज करिवार अछि एंड इफ योर फैसिलिटी इज यू हैव फैसिलिटी फॉर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एसएनसीयू अछि आपन पाखरे ट्रेंड स्टाफ अछंती आपन सेठी करि परिबे अदरवाइज बेटर टू शिफ्ट देम as early as possible to higher center. Next madam. ठीक अच्छी. Whenever we are expecting or suspecting any child having jaundice there are 3 ways 3 steps to approach further. प्रथम होची क्लिनिकली असेस करिवा सेटा मोस्टली इंपोर्टेंट काहे कि ना क्लिनिकल असेसमेंट आपन को पई कि इट इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड किछि सेति पई इन्वेस्टिगेशन दरकार नाही लेबर इन्वेसिव भी नाही एंड कॉस्ट इफेक्टिव सेति पई किछि कॉस्ट आपन कर खर्च हुए नाही आपन किंतु सेति रे गोटे जिंस होची आपन कर क्लिनिकल एक्सपर्टाइज दरकार. आपन प्रथम जिने जे निकुरे पोस्टिंग अछि न्यूबॉर्न बेबी को केबे भी देखि नाही से संगे संग जॉन्डिस में भी देखिबार एते कॉन्फिडेंट नथिबे तेनु क्लिनिकल असेसमेंट पई किछि दिन काम कला परे निकुरे या एसएनसीयू रे आपनकर सेही स्किल टा डेवलप हुए. क्लिनिकल असेसमेंट पई क्लिनिकल असेसमेंट इज आल्सो नोन एज योर नेकेड आई इवैल्यूएशन. आपन निज आखि रे देखिबार इवैल्यूएशन सेटा को अदरवाइज इट इज नोन एज क्रामर्स मेथड. सेतरे आपन कोन करिवे मोटा मोटी जॉन्डिस देखिया पई ता पूर्व किछटा रिक्विजिशन अछि. फर्स्ट रिक्विजिशन बेबी को आपण पूरा अनकवर करिवे बेबी को एमती एरिया रे नै कि असेसमेंट करिवे जोटा नेचुरल लाइट अर्थ आपण बार लाइट रे न करी कि झरका पाखरे कि कॉरिडोर पाखरे इफ पॉसिबल बेबी स्टेबल अछि त आपण झरका पाखरे जोटी ओपन खोला अछि कॉरिडोर पाखरे कबाट बंध पाखरे खोला करी कि सेठी देखिवे. सेथरे क्रामर्स रे रूल रे छुआर बॉडी पार्ट को रफली 5 पार्ट्स रे डिवाइड करा जाय. गोटे होची फेस एरिया तापर होची अपर चेस्ट तापर एब्डोमेन थाई लेग एंड बियॉन्ड दैट. जदि आपनकर जॉन्डिस आपण देखुचंती जॉन्डिस देखिया पूर्व आउ गोटे इंपोर्टेंट जिंस होची आपण प्रथमे स्किन बेबी रो स्किन ता रेडिश कलर थाए बिकॉज तांकर पॉलीसाइथेमिया हायर एचबी लेवल थाए सेति पई आपण सम टाइम देखिबारे मे बी सम टाइम्स देयर विल बी सम डिफिकल्टीज आपण असेस करिवारे डिफिकल्टी हेई पारे. सेति पई बेस्ट वे ऑफ असेसिंग जॉन्डिस विल बी टू फर्स्ट ब्लांच द स्किन. आपण स्किन टा को ब्लांच करिवे आउ जोटा बोनी सरफेस अछि आपनकर बेबी रो जेंति कि फोरहेड हैला आपनकर स्टर्नम हैला
स्टर्नम परे तापरे आपण एब्डोमेन पाखरे देखि परिबे थाइरो जोटी फीमोरल बोन जोटी टिके बोनी लागुची सेही एरिया रे सीन ऑफ टिबिया ए सब जगह रे स्किन टा ब्लांच करबा इजी हुए ब्लांच कला परे आपनकर ब्लड सर्कुलेशन टा टिके पळै जाय सेठू से एरिया टा पेल हे जाय सेते बळे आपण क्लिनिकली आपण जॉन्डिस टा इजीली देखि परिबे डिपेंडिंग ऑन द आपण प्रथमे स्टार्ट करिवे फेस रे ब्लांच करिकि देखिले जॉन्डिस अछि इफ इट इज इन फेस तो आमर रूल रे देखिबे मु गोटे आपन को ये जो टेबल देइछि सेथरे आपन देखिबे रेंज ऑफ बिलिरुबिन दिया जाइछि 4 to 8 बट आपन को इजीली मन रखिबा पई भी जेमति आपन सब बेले जदी टेबल टा आपन को मुंडा रे नाही कि भूली जाइछंती आपन मन गोटे पांचटा स्टेप को देखंतु मु पांचटा पार्ट पई मोटा मोटा रूल कर देइछि 5 10 12 15 एंड मोर देन 15 तार्थ जदि फेस रे आपन खाली जॉन्डिस अछि अलगा पार्ट रे आपन को जॉन्डिस लागुनी तार्थ जॉन्डिस 5 मिलीग्राम पाखा पाखी जॉन्डिस अछि जदि आपन अपर ट्रंक रे अछि 10 मिलीग्राम लोअर ट्रंक रे 12 मिलीग्राम एंड आर्म और लोअर लेग्स रे 15 milligram even palms and soles it is more than 15 milligram any child having jaundice more than palms and soles in palm or sole जोटा 5 नंबर जोन आपन को देखा जाउची सेठी jaundice अछि माने एटा 15 milligram रो ऊपर jaundice तो definitely that is a danger that is immediately danger for the child so you should refer the child or arrange for exchange transfusion First is clinical assessment. Jodi clinical assessment hei gala, then clinical assessment is always a screening tool. Second, next apna better hochi any clinically assessed jete jaundice laguchi apna taku confirm. Next slide please. हाँ सर जदि आपण क्लिनिकली असेस करूछंती एंड देयर इज जॉन्डिस इज प्रेजेंट तो नेक्स्ट आपनकर ऑप्शन होची सेरम बिलिरुबिन करिवे ट्रांसक्यूटानियस बिलिरुबिन करि परिवे ट्रांसक्यूटानियस बिलिरुबिन इज आल्सो अनदर स्क्रीनिंग मेथड सेटा कंफर्म करी कहबो नै बट ये मशीन जदि आपन पाखरे अवेलेबल अच्छे सेटा भी नॉन इन्वेजिव मेथड जेमति मु आपन को फोटो देखैछि बेबी रा स्टर्नम हैला कि आपनकर फोरहेड हैला सेठी सेही मशीन टा प्रेस करिकि आपन 3 टाइम्स रीडिंग नै परिबे डिपेंडिंग ऑन कोन आपन को पाखरे की को कंपनी रा अच्छी मशीन डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चर द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव डिफरेंट टाइप्स so some of them will give reading only one press some of them will take average of 5 readings तो आपण सेटा प्रेस करिकि से रीडिंग टा जेमति एथरे देखौछि 5.8 you can get that reading तो एथरे फायदा कोन हुए एटा नॉन इन्वेजिव अछि इजीली करि परिबे सेति पई बेसिक किछि स्किल दरकार पड़ेनी ब्लड सैंपलिंग रो रेट कमी जाय ऑब्वियसली आपण एथरे बिलिरुबिन देखि कि नॉन सीरियस जॉन्डिस जोटा नॉन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस यू कैन रूल आउट मेनी ऑफ द जॉन्डिस तो देखा जाय छि जदि आपण को यूनिट ट्रांसक्यूटानियस बिलिरुबिन मेटर यूज करे ताले आपण को 100 रु आगुरु जेते ब्लड सैंपलिंग होउतला तार 30% ब्लड सैंपलिंग कमी जिवो आउ गोटे वैल्यू अपेक्षा जदि आपण 12 घंटा अंतर रे गोटे बेबी रो वैल्यू को फॉलो कले सेटा बेसी रिलायबल आपनकर रिपोर्ट दिए बट प्रॉब्लम होची ए जॉन्डिस देखिबा पई दिस बिलिरुबिनोमीटर इज नॉट वैलिड फॉर प्रीटर्म बेबीज जदि 35 वीक्स रे तळे वाला बेबी को आपण जॉन्डिस पई एटा यूज करिवे सेटा एते रिलायबल वैल्यू देखाइनी सेकंड वंस फोटोथेरापी जदि स्टार्ट करि देले स्किन टा ब्लांच हे जाईची 24 hours परे जदि आपण फोटोथेरापी वाला बेबी को देखियो को चाहउछंती दैट विल अगेन नॉट गिव रिलायबल वैल्यू थर्ड आपनकर 24 hours रो पूर्वरु कोनोसी बेबी को जदि फर्स्ट दिन रे जॉन्डिस हेची 24 hours पूर्वरु बिलिरुबिन वैल्यू आपण चेक करियो को चाहउछंती सेटरे भी एटा रिलायबल हेई परिबो नै से सब जगह रे एंड एनी वैल्यू मोर देन 14 मिलीग्राम जदि टीसीबी रे आपनकर ट्रांसक्यूटानियस बिलिरुबिन मीटर रे जदि 14 मिलीग्राम रु बेसी आपनकर वैल्यू आसे ताको ऑब्वियसली आपनकर सेरम बिलिरुबिन करिकि ब्लड सैंपल करिकि कंफर्म करिया को पड़िबो ब्लड सैंपलिंग रो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ब्लड सैंपल पाई देयर आर टू मेथड्स गोटे होची स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेटा आपनकर एसएनसी रे मोस्ट ऑफ द यूनिट्स विल नॉट हैव सेते आपण कोन करंती ना ब्लड आपण छोटो गोटे छोटो 26 गज नीडल रे हमें वेनस सैंपल नियंती और सेते ओनली 0.2 ml ऑफ ब्लड रे कैपिलरी रे फिल करके ताकू गम या ग्लू रे फिक्स करके सेंट्रीफ्यूज मशीन रे बुलाई की ताकू सेंट्रीफ्यूज करंती 5 मिनिट्स तापरे हमें सेटे रे से जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन टा सेकंड आपण तळे जोटा मशीन टा देखुचंती सेथरे लगैले सेथरे बिलिरुबिन आसी जाय जदी एई मशीन टा भी आपण पाखर नाही आपण लैबोरेटरी को जेमती हमर एलएफटी आरएफटी पठा जाउची 0.5 ml प्लेन वायल रे 0.5 ml सैंपल नै कि सेरम सैंपल पठे देबे तार रिपोर्ट आसीला जाके वेट करिवे
हला वंस आपण रिपोर्ट आपण को मिली गला तापर आपण डिसाइड करिवे केमती फोटोथेरापी स्टार्ट करिवे केतेबेले स्टार्ट करिवे सेटा नेक्स्ट स्लाइड रे हमें कहबा नेक्स्ट स्लाइड केते गुडा रिस्क फैक्टर जेतेबेले भी बेबीर जॉन्डिस पे आपण इवैल्यूएट करचंती गोटे निमोनिक्स जस्ट आपण कहूची एई सब रिस्क फैक्टर जदी थिला ताले आपण टिके कॉशस हे जिबा कि जॉन्डिस टा हमको सीरियस आडू को जाई पारे जॉन्डिस पई बेबी को फोटोथेरापी दरकार पड़े सेटार निमोनिक कोन जे रे जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स जदी प्रथमे छुआ को आपण 24 घंटा भीतर फेस रे भी जॉन्डिस देखा जाउची फेस रे जॉन्डिस माने 5 मिलीग्राम पर डेसिलिटर सेतिक भी जॉन्डिस अछि ताले एटा बहुत सीरियस जिंस सेटा आपनकर किछि ना किछि अंडरलाइन कॉज थाई पारे बेबी माइट बी हैविंग अंडरलाइन हेमोलिसिस सेकेंड जदि पूर्व छुआ तार भाई भौणी जो पूर्व जन्म होता छुआ को भी जॉन्डिस थिला और फोटोथेरापी मिलता बोली माँ कहते आम टे कॉशस हो कि छुआ को भी जॉन्डिस दरकार पड़ पारे थर्ड हेमोलिसिस जदि कौटी भी होची आम जानी ना G6PD डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन N is non-nutritive sucking जदि बेबी फीडिंग करि पारुनी मु पछ स्लाइड वन कर कहबी गोटे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस थाए फीडिंग इनएडिक्वेसी जो जॉन्डिस एक्सैजरेट ही पारे आउ गोटे बाहर जते बेले आपण बेबीटा लिथार्जिक अछि सा संगे जॉन्डिस अछि यूरिन आउटपुट कम होछि दैट मींस बेबी कैन हैव इन्फेक्शन आल्सो एंड थर्ड लास्ट C फॉर केफालोहेमाटोमा जदि आपनकर कैपुट डिलीवरी हेछि डिफिकल्ट वाजिनल डिलीवरी हेछि और यू आर हैविंग फोरसेप डिलीवरी अच्छी ताले आपण देखिबे गोटे बॉगी स्वेलिंग अच्छी वन साइड ऑफ द हेड बेबी रो एंड दैट इज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग दैट मींस किछि बेबी रो सबक्यूटेनियस टिश्यू रे ब्लीडिंग हेछि दैट विल आल्सो कॉज underlying hemolysis gradual hemolysis and that can cause jaundice as such as compared to other countries amar Indian manakar and North Indian population रे jaundice हबार chance टिके बेसी थाए next next slide next yes तो मु आपन जेमती कहउतली जेतेबेले जॉन्डिस थाए छुआ मानकर आमे दीटा जिंस रे कंफ्यूज हे जानती कोटे होला ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस टा किछु नुए जदि छुआर को मार फीडिंग एडिक्वेट हुए नाही मार फीडिंग से खाई पारु नाही प्रीटर्म अच्छी कि मार देह भल नाही ताको सिजेरियन पर पेन होची कि से एनेस्थेसिया रे अच्छी तार ज्वर हेची तार मिल्क आउटपुट करेक्टली आसुनी सेते बेले जो जॉन्डिस टा हुए सेटा ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कुआ जाए सेटा टिपिकली फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ रे हुए आ तार ट्रीटमेंट हैला फोटोथेरापी रेंज रे जदि बिलिरुबिन अच्छी आपण फोटोथेरापी तो स्टार्ट करिवे ता संगे संगे मार मिल्क आउटपुट बढ़िया पई हमें चेष्टा करिवा जेमति कि मदर को हमें रिलैक्स होबा पई कहिबा ताको एडिक्वेट ओरल इंटेक बढ़ेबा पई कहिबा टिके नाइट रे रेस्ट करिवा को कहिबा फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग बेटर करिवा गैलेक्टोगॉग्स एमति तो किछ रोल नाही बट समटाइम्स इट कैन एक्ट एज ए प्लेसेबो थेरापी दैट विल इंप्रूव द साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द बेबी मदर आल्सो तो ए सब करिकि ब्रेस्ट मिल्क रो इनपुट बढ़ेबार अछि आपन को सेतरे आपन ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस रो धीरे धीरे ठीक हेजिबो another entity which is little rare as compared to breastfeeding jaundice that is known as breast milk jaundice जोटा कि प्रथमे सेटा towards the end of first week start हुए and sometimes it can cause prolonged jaundice देखा जाइछि 21 दिन 1 month पर्यंत भी गोटे छुआरा जदि jaundice कंटिन्यू करूछि सेठी पई सेटा को ब्रेस्ट आ आपण सेकंड होचे इट इज ए डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कहबा पई आपण प्रथमे आउ सब जिंस बेबी रो वेट गेन प्रॉपर ठीक होची छुआटा सुस्थ अछि तार किछि हेमोलिसिस हो नै एंड तार RH आइसोइम्युनाइजेशन मदर नाही कि मदर G6PD डेफिशिएंसी नाही ए सब जिंस नाही हमें जदि पाइले तार जॉन्डिस अछि ताले हमें ताकू ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस बोली लेवल कर परिबा एटा काहे कि हुए देयर आर सम हाइपोथेसिस दैट देयर आर some presence of some unknown substance in the breast milk which can cause breast milk jaundice यार treatment हैला कि एथरे भी although we tell this as breast milk jaundice but most of the time we don't discourage mother to stop breast milk feeding सेतरे काहे कि कोंती breast milk feeding टाको आपण जदि jaundice पई भी बंद करले that will have a negative feeling towards mother
सोसाइटी विल स्टार्ट ब्लेमिंग मदर को ब्लेम करिवे कि तमरो क्षीर जोगु छुआ को जॉन्डिस होउची सेति पई आमे ट्राई करू फोटोथेरापी रे भी जदी से ठीक हे जाबो बेबी वी नेवर स्टॉप ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस ओनली इफ we are very much sure the jaundice is because of breast milk jaundice and child is at the verge of exchange transfusion. In those rare cases 2 ରୁ 3 दिन मे भी हम फीडिंग टाको बंद करके रखी परिवा बट आपनकर एसएनसीयू रे जेतेबेले स्टाफ नर्सेस माने मैनेज करचंती ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस ता किछि आपनको मैनेजमेंट रे डिफरेंट हबो नै जे आज कंपेयर टू अदर जॉन्डिस आपण ब्रेस्ट मिल्क बंद करिवा पई केबे भी एडवाइस करिवे नै नेक्स्ट तो एटा मु देखुतली आपन को गोटे इजी फ्लो डायग्राम मु एनएनएफ गाइडलाइन रु नहीं छी सेतरे आपन को देखा जाय छी जतेबेले आपन कोनोसी बेबी को नर्सरी रे देखुचंती प्रथमे जॉन्डिस क्लिनिकली देखिले आपन जॉन्डिस अछि त आपन विजुअली असेस करिवे क्रामर्स रूल रे को एरिया रे जॉन्डिस अछि 12 घंटा रे बेटर होबो जदी करि पारले आपण प्रथमे 3 ରୁ 5 दिन जाके देखिबे हैला देखिला परे आपण पाखरे जदी मशीन अछि यू कैन सप्लीमेंट विथ ट्रांसक्यूटानियस बिलिरुबिनोमीटर इफ इट इज अवेलेबल जदी नाही ताले आपण कोन करिवे नेक्स्ट ए फ्लो डायग्राम रे पळैबे सेतरे आपण देखिबे प्रथमे देखिबे बेबी को रिस्क फैक्टर ऑफ सीरियस जॉन्डिस अछि कि नाही कोन रिस्क फैक्टर सीरियस जॉन्डिस पई को जाय गोटे हैला आपणकर जदी 24 घंटा रे भितर जॉन्डिस होउची हेमोलिसिस अछि प्रीवियस बेबी को जॉन्डिस अछि जीसीएसपीडी डेफिशिएंसी अछि कि बेबी को केफालोहेमाटोमा अछि एई सब जिंस गुडाक आपण लिखाई छी किबा कोनोसी समय रे जदी जॉन्डिस रे आपनको हाथ आउ गोड़ नील पड़ जाउ सॉरी हळदिया हो जाउची हाथ पापुली आउ तळ गोड़ सोल आपनकर जदी हळदिया हो जाउची सेता तार अर्थ छुआ को सीरियस जॉन्डिस अछि आपण सेते बेले रिपोर्ट पई टेस्टिंग करके पठै देबे यू विल सेंड सैंपल for laboratory serum bilirubin assessment but don't wait for report to come report आसीबा पई डिपेंडिंग अपन फैसिलिटी केते भेलो अछि लैबोरेटरी फैसिलिटी रो केते समय रे रिपोर्ट दउचंती 4 घंटा 6 घंटा लागि पारे 12 घंटा लागि पारे 24 घंटा भी लागि पारे तेनु आपण रिपोर्ट पई न वेट करके आपण क्लिनिकल असेसमेंट देखि कि आपण तुरंत फोटोथेरापी स्टार्ट कर दे पारिबे आ जते बेले आपनकर रिपोर्ट आसी गला लैबोरेटरी वैल्यू सेही हिसाब रे प्रथम तापर आपनकर जॉन्डिस चार्ट जो अछि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स सेही जॉन्डिस चार्ट रे देखि कि नेक्स्ट आपण देखिबे कि फोटोथेरापी कंटिन्यू करिबा ना छुआर जॉन्डिस ता एक्सचेंज जोन रे अछि ताकू एक्सचेंज करिया पई रेडी करिबा एक्सचेंज करिया को रेडी जदी कले आपण पाखरे मैक्सिमम टाइम फैसिलिटी न थाए तेनु आपण ताकू फोटोथेरापी स्टार्ट करिकि रेफर करि देबा तापर सेकंड होची जदी जॉन्डिस ता सीरियस लागुनी ताले आपण टीएसबी करिबा टीएसबी करिकि तार रिपोर्ट आसीबा जे कि वेट करिबा और रिपोर्ट देखिकि तापर हमर जॉन्डिस चार्ट रे चार्ट करिकि डिसाइड करिबा कि नेक्स्ट हमको कोन मैनेजमेंट करियो पड़ी पारे नेक्स्ट एटा जो दीटा आपन को कहूतिल ना देयर आर टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स रो दीटा गाइडलाइन अछि सेटा होछि 35 वीक्स रो ऊपर वाला बेबी को पई एटा आपन को पूरा मन रखिया दरकार नै नुवा स्टाफ इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर द न्यू जॉइनिंग स्टाफ्स टू रिमेंबर और मग अप एवरीथिंग बेटर हबो जो यूनिट गुडा को एसएनसीयू रे आपन को फोटोथेरापी वाला बेबी एडमिट होचंती सेठी आ ओपीडी रे एई चार्ट को आपन जदी ताको डाउनलोड करके प्रिंट करके लगे देबे त आपन इजी रेडी रेकॉग्नर भलिया यूज कर परिबे सेते मु आपन कहितली आपनकर 5 डेज जाके हमें आवर्स ऑफ लाइफ रे कैलकुलेट करू तापरे डेज रे हमें कैलकुलेट करू तो एठी आपन देखि परिबे देयर आर 3 लाइंस तीनटा लाइन अछि गोटे चार्ट एटा फर्स्ट चार्ट ता फोटोथेरापी पई नेक्स्ट चार्ट मु देखैबे सेटा होछि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन पई देयर आर 3 लाइंस तीनटा लाइन अछि तळटा पूरा सॉलिड लाइन तापरटा डॉटेड लाइन तापरटा आउरी स्मॉल डॉटेड लाइन अछि तळ सॉलिड लाइन ता होछि सबटु हाईएस्ट रिस्क बेबी मानकर कोटा सेटा हाईएस्ट रिस्क जदी 35 रु 37 वीक्स रे बेबी अछंती आउ तार रिस्क फैक्टर्स अछि रिस्क फैक्टर ऑलरेडी मु आपन कहितली जदी मदर आरएच नेगेटिव अछि जीसीएसपीडी डेफिशिएंसी अछि बेबी को एस्फिक्सिया हे गला बेबी को सेप्सिस होलिया लागुची सेप्सिस अछि कि बेबी को दिस आर लेथार्जी आउ टेंपरेचर इंस्टेबिलिटी इंडिकेट करे कि बेबी को अंडरलाइंग सेप्सिस अछि आउ अल्बुमिन हाइपोअल्बुमिनेमिया सेटा मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें करि परिबो नै जदी आपन को ए सब जिंस सेप्सिस आपन मन रखि दियंतु जदी सेप्सिस होलिया लागुची ए सब रिस्क फैक्टर जदी अछि आपन 35 रु 37 वीक्स रे विथ रिस्क फैक्टर लोअर लाइन टाको कट ऑफ फॉर फोटोथेरापी पई कंसीडर करिवे आ जदी 35 रु 37 वीक्स रे ए सब किछि रिस्क फैक्टर नाही ताले आपन तार ऊपर लाइन टाको कंसीडर कर परिवे आ नेक्स्ट सबा ऊपर स्मॉल डॉटेड लाइन जोटा अछि सेटा होछि बेबीज bigger babies of higher gestation more than 38 weeks and without any risk factors
माने किछि रिस्पेक्ट नाही बेबी रो जेस्टेशन इज मोर देन 38 वीक्स ते ऊपर लाइन टा कट ऑफ रे नेबे एटा जदी आपण मन रखिबा को चाहउचंती एटा आपण मन रखि परिबे देखंतु आफ्टर 120 आवर्स 120 माने 5 दिन परे जदी कोनोसे छुआर जॉन्डिस आसुची फोटोथेरापी रो कट ऑफ सबुटु अपर लाइन लो रिस्क लाइन रे होची 21 मीडियम रिस्क लाइन रे होची 18 तळ रिस्क लाइन रे अछि 15 मु समस्त को एडवाइस करे एई वैल्यूटा आपण मन रखि दियंतु 5 दिन परे जो भी बेबी फोटोथेरापी दरकार हबो 21 18 और 15 एथिरे आपण फोटोथेरापी स्टार्ट करि परिबे नेक्स्ट स्लाइड तो एटा सेम आपन को सेम फोटो बलिया देखा जाउची बट डोंट कंफ्यूज विथ द प्रीवियस स्लाइड प्रीवियसली जोटा थिला सेटा होची आपनकर फोटोथेरापी पई एटा होची आपनकर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन पई जते बळे ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज ब्लड चेंज करिया को पड़े सीवियर जॉन्डिस पई एई चार्टटा यूज करिवे सेथरे आपन देखिबे जेमति आपन कहितली सेम फार्मूला सॉलिड लाइन big dotted line and small dotted lines there are 3 lines आउ से जॉन्डिस कर्व टा फ्लैट हे जाउची डे 5 ऑफ लाइफ रे आ एठी जो कट ऑफ टा आपण रहिला सेइतरे आपण 4 4 ऐड कर दियंतु मु आपण कहितली 21 18 15 इथरे आपण 4 4 ऐड कर देबे मोटा मोटा देखंतु सेटा आपण को आसी जिवो जोटा 15 थिला आपण को फोटोथेरापी जोन सेटा आसी गला 19 को जोटा आपण को 18 थिला सेटा आसी गला 23 को आ जोटा थिला 21 थिला ऊपर फोटोथेरापी पई एक्सचेंज जोन तार हे गला 25 मिलीग्राम ता पूर्व चार्ट गुडा को आपण मन रख परिबेनी सेटा आपण चार्ट लगेई देबे दैट विल बी इजी फॉर यू नेक्स्ट स्लाइड एटा आपण को जो दीटा प्रथम स्लाइड दीटा देखैली सेटा होछ मोर देन 35 वीक्स जदि आपण को छुआ प्री टर्म बेबी अछि सेटा टिके आपण को कंफ्यूज करि पारे जे मु तो 35 वीक्स तळ बेबी मानकर विषय किछि जानि पारुनी सेटे फोटोथेरापी केमति स्टार्ट करिवि लेस देन 35 वीक्स फोटोथेरापी स्टार्टिंग फोटोथेरापी इज लिटिल ट्रिकी एंड मोर चांस ऑफ हैविंग हाइपरबिलिरुबिनेमिया ड्यू टू फिजियोलॉजिकल और जॉन्डिस ऑफ प्रीमैच्योरिटी सेथरे आपण देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चार्ट आपण को पई सबटु इजी जोटा हबो देयर इज अनदर चार्ट नोन एज मिजिल्स चार्ट बट इन दैट यू हैव टू रिमेंबर लॉट ऑफ वैल्यूज and that you cannot remember तो मु एथि पई आपन को एई चार्टटा जोटा पुराना हमें यूज करथले एई चार्टटा भाबिली आपन को फोकस करिवि देखैबा पई एथरे आपन देखंतु हमर 250 ग्राम डिफरेंस रे 35 वीक्स रे तळे छुआर बर्थ वेट वाइज आपनकर 250 ग्राम रो कैटेगरी डिसाइड करा जायछि प्रथमे से 500 टू 750 750 टू 1000 1000 टू 1250 1250 टू 1500 तापरे 1 किलो रो गोटे ग्रुप दिया आइछि मु आपन को मोटा मोटा कहि देबी जॉन्डिस पई आमे सब बळे स्टार्ट करंती फोटोथेरापी जोटा आपण जो रेंज रे दिया आइछि ना सेही रेंज रे जदी बिलिरुबिन अछि आपण फोटोथेरापी स्टार्ट करिवे हैला आपण फोटोथेरापी स्टार्ट कला परे आउ ता धरे 7 मिलीग्राम आपण जदी एक्स्ट्रा ऐड कर देबे देखंतु एटा जदी 500 अछि तार तो हमें फोटोथेरापी स्टार्ट करिवा 5 रु 8 मिलीग्राम रे आउ एक्सचेंज करिवा हमें सेइतरे आपण ऐड करि दियंतु 7 7 5 रे ऐड कर देले 12 हे गला 8 रे ऐड कर देले 7 15 हो गला सेही परी आपण देखिबे मोटा मोटा सब जिंस 5 रु 7 मिलीग्राम ऐड कर देबे एक्सचेंज जोन हे जिवो आपनकर फोटोथेरापी जोनटा बर्थ वेट जा अछि सेही जोन रे जदी आपनकर भाबी देंतु मोटा मोटा गोटे बेबी रे जदी 1200 मिलीग्राम अछि 1200 ग्राम वेट अछि एंड ही इज 30 वीकर आपण तेनु फोटोथेरापी स्टार्ट करिवे 12 मिलीग्राम रे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन पई ट्राई करिवे 17 मिलीग्राम जेतलो जॉन्डिस हे जिवो सॉरी 12 प्लस 7 इज 19 मिलीग्राम जदी जॉन्डिस हैला से बेबी को डेफिनेटली फोटोथेरापी स्टार्ट करा जिवो सॉरी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करा जिवो नेक्स्ट स्लाइड एटा मो फोटोथेरापी रो केते गुडा आपन को मैडम एतरे तीनटा आउ भी थिला फोटोज अच्छे क्लिक कले सेइतरे हां दैट हां यस मे बी अच्छा एनिमेट होई छै ओके सो फोटोथेरापी रो फोटोथेरापी इज द मोस्ट कॉमन मेथड और मॉडलिटी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस जेतोळे अपन डिसाइड करले एज पर एनी चार्ट व्हाट इज कन्वीनियंट फॉर यू प्री टर्म हो कि टर्म बेबी अपन डिसाइड करले फोटोथेरापी देबे फोटोथेरापी ता काम केमती करे सेटा होची गोटे लाइट वेव्स हमर थाए फोटोथेरापी रे जो लाइट ता दिया जाए ब्लू लाइट दिया जाए ब्लू और ग्रीन लाइट थाए सेमानकर वेवलेंथ जोटा होची 450 रु 460 नैनोग्राम रो नैनोमीटर रो सेही वेवलेंथ रे कोन हुए ना बिलिरुबिन गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर soluble non toxic forms which are easily excreted by
your stool and urine mostly urine रे excrete हो जाए तो सेटा advantage कौन होची एटरे किछि आपण blood sampling दरकार नहीं non invasive अच्छी very less cost phototherapy machine जदि थरे आपण किनी देले तार return value बहुत दिन रहइबो एते maintenance रो खर्च हुएनी and second the blood baby रे blood sampling भी किछि दरकार पड़े नहीं and very effective also आपण phototherapy जेमति start करिवे if you are giving effective phototherapy definitely for bilirubin will start falling मल्टीपल टाइप्स ऑफ मशीन अच्छी फोटोथेरापी पाई ओल्डर जमाना रे जो यूज करथुले हालोजन बल्ब ए फोटोटा जे देखिबे फर्स्ट रे हालोजन बल्ब गोटे बल्ब भलिया अच्छी सेटा आजकल ऑब्सोल्यूट हे गलानी आमे यूज करूनु सेकंड इज यूज्ड एज दिस वन कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब रो मो पाखरे एटी इनफैक्ट फोटो नाही बहुत गोटे का यूनिट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब आपण बारलाइट भलिया ट्यूब देखा जाए सेइथरे आपण फोटोथेरापी देई परिवे थर्ड जोटा देखिली तळे देखंतु गोटे बेबी सोइची ब्लैंकेट टा व्हाइट भलिया देखा होची दैट इज नोन एज पिली ब्लैंकेट and fourth one is light emitting diode known as LED एटा वर्तमान मोस्ट कॉमनली यूज होची एटार कॉस्ट टिके हाई थाए बट तांकर सेल्फ लाइफ इज बेटर मींस आपनकर जो मेजॉरिटी यूनिट वर्तमान यूज करचंती CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट और लाइट एमिटिंग डायोड तो CFL कंपैरिजन रे यांकर जोटा सेल्फ लाइफ और जो पीरियड जाके आपण यूज कर परिवे विदाउट चेंजिंग द इक्विपमेंट और मेंटेनेंस सेटा होची लॉन्गर जदि आपण कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब को प्रति 6 मंथ्स रे चेंज करिया को पड़े LED हैज मोर हाफ लाइफ LED मोटा मोटा अराउंड कॉम्पैक्ट CFL ट्यूबिंग रो जो लाइफ स्पान होची तार 1000 आवर्स बट जतबे कि LED लाइट रो 10,000 आवर्स फोटोथेरापी दे पारिबे आपण गोटे मशीन रे आउ एक्जाक्टली डिटेल्स आपन को एठी गोटे बिली आई बोली गोटे जिंस थाए सेइथरे आपनकर बिली टाइमर थाए माने केते घंटा एक्जाक्टली यूज होईची से सब आपन को देखै दिए phototherapy machine ro jodi maintenance kahibe that will take little longer time I may be able to if you have some of the doubts I will be able to explain them in the discussion part but abhi in presentation it will not be possible to cover everything how the phototherapy machine is maintained and all so I will try to cover the basic principles of phototherapy and what are the things we should take in care when the child is receiving phototherapy next slide कौन कौन देखा जो बेबी को फोटोथेरापी स्टार्ट करा प्रथम है कि आम हैंड हाइजीन करवा बेबी को पूरा नेकेड करदेबा तापर तार आखि रे आई पैच लगेबा मु गोटे फोटो आपन को पुराना स्लाइड देखैतिली आई पैच लगेदेबा डाइपर एरिया को कवर करे बेबी रो जेनिटलिया एरिया को डाइपर रे कवर करिया काहे कि ना फोटोथेरापी जो लाइट टा मिलुची से लाइट रे समटाइम्स एटा देखा जायछि डीएनए डैमेज करि पारे जेतु एई दिटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रेटिना इज वेरी सेंसिटिव फॉर डीएनए डैमेज आमे सेई दिटा एरिया को प्रोटेक्ट करबा को चेष्टा करा जाओ तापरे बेबी को आमे बहुत पाखरे रखिबा माने फोटोथेरापी यूनिट टा को जत्ते तळु को करि हबो तार हाइट टा कम करिकि बेबी को फोटोथेरापी रा आज क्लोज एज पॉसिबल करबा बट ट्राई करबा कि एटा 45 सेंटीमीटर बेबी रा सरफेस रो ऊपर को न जाओ न गले तार इफेक्टिव फोटोथेरापी मिली परिबो नै आउ कुआ जाए जेतेबेले आपण चाहूचंती इंटेंसिव फोटोथेरापी दबा पई इंटेंसिव फोटोथेरापी दबा पई बेबीज रो हाइट आ फोटोथेरापी यूनिट रो बेबी रो अपर सरफेस आ फोटोथेरापी भीतर डिस्टेंस टा शुड बी as low as 15 सेंटीमीटर आउ आपण कंटिन्यू करबा ब्रेस्ट फीडिंग एटा गोटे जिंस इंपोर्टेंट फोटोथेरापी दबा अर्थ नुहे जे आपण ब्रेस्ट फीडिंग बंद करके आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दबा कि बेबी को चामच रे फीडिंग करैबा चेष्टा करबा अनलेस अंटिल बेबी इज हैविंग एट द जोन एक्सचेंज जोन अदरवाइज आमे चेष्टा करबा मदर को इट शुड बी कंटीन्यूअस फोटोथेरापी एक्सेप्ट बेयरिंग द पीरियड व्हेन बेबी इज रिसीविंग ब्रेस्ट फीडिंग माने आमे फोटोथेरापी कंटीन्यूअस 24 घंटा 24/7 प्रोवाइड करबा खाली फीडिंग पई मझी मझी रे ताको discontinue करके मदर पाखरे फीडिंग करके as soon as possible then we should shift him back under phototherapy unit आउ जेतेबेले फोटोथेरापी स्टार्ट करचंती आमे नेक्स्ट बिलिरुबिन केतेबेले करबा नेक्स्ट बिलिरुबिन we will do at 8 to 24 hour interval 12 घंटा रे बिलिरुबिन सेरम बिलिरुबिन लेवल करबा आ करके से बिलिरुबिन वैल्यू we will try to plot again in the AAP chart जो चार्ट आपन को पूर्वरु देखैतिली सेही चार्ट रे देखिबा कि एबे जॉन्डिस टा जदी प्रथमे स्टार्ट हेतिला जो वैल्यू फोटोथेरापी रो ऊपर कट ऑफ रे थिला एबे धीरे धीरे तळु को खसिबा स्टार्ट करलानी कि न करलानी एटा आपन कोइ देतिली एलईडी लाइट जदी थिबो 6 मंथ्स रे जदी एटा होची आपन को एलईडी लाइट कई 12000 आवर्स और
आउ जदि आपण सीएफएल अछि ताले आपण देखिबे जदि ब्लैकनिंग होउची ट्यूब टा बार लाइट टा फ्लिकरिंग करूची साइड साइड एरिया ब्लैक हे गलानी से सब जिंस देखि के आपण चेंज करिया को पड़ी पारे नेक्स्ट स्लाइड केते थरे फोटोथेरापी स्टार्ट कला परे केते बेले डिसाइड करिवे फोटोथेरापी बंद करिवे केबे केते बेले बंद करिवे एग्जैक्ट को वैल्यू सेति पई किछि गाइडलाइन नाही हमको एटा ग्रॉसली मन रखिया को पड़िबो फोटोथेरापी जो कारण जो वैल्यू पई आपण स्टार्ट करथिले सपोज आपण फोटोथेरापी 17 मिलीग्राम रे स्टार्ट करचंती जदि धीरे धीरे 17 मिलीग्राम रो तळे तळे खसीबा स्टार्ट हे गला मोटा मोटा 15 मिलीग्राम रो तळे पळेला एंड जो वैल्यू टा फोटोथेरापी रो कट ऑफ जोन अछि माने आपण एपी चार्ट रे प्लॉट करिक देखिले सेही आवर ऑफ लाइफ रे जदि फोटोथेरापी रो कट ऑफ जोन 15 अछि एटलीस्ट 3 मिलीग्राम 2 to 3 मिलीग्राम तळे जदि आपण को गोटे की दीटा कंसेक्यूटिव वैल्यू मिल जाउची 12 घंटा इंटरवल रे कि 12 मिलीग्राम थरे मिलिला आ गोटे थरे 11 मिलीग्राम पर डेसिलिटर मिल गेला तार तो 15 मिलीग्राम कट ऑफ वैल्यू पई आपण को दीटा वैल्यू मिल गेलानी 11 and 12 मिलीग्राम देन यू कैन सेफली स्टॉप फोटोथेरापी रिबाउंड देखिबा पई रिबाउंड फोटोथेरापी होची आपण को कहा जाय कि जदि फोटोथेरापी बंद कले केते जनकर बेबी कर स्पेशली दोस हु आर प्रोन टू हैव हेमोलिटिक जॉन्डिस like RH immunization G6PD deficiency these children are prone to have आपण फोटोथेरापी बंद कला परे for again phototherapy jaundice values are likely to be rising again say value सेति पई हमें कोन करंती 24 hours stopping of phototherapy we will do a rebound bilirubin देखिबा सब बेबीज करा दरकार नहीं यदि आपण भाबुचंती इट इज बिकॉज ऑफ ओनली ब्रेस्ट फीडिंग inadequacy ब्रेस्ट फीडिंग jaundice अछि आपण फीडिंग एस्टैब्लिश कर सलेन if you feel there is only breastfeeding jaundice and breastfeeding has been established and you have stopped phototherapy you can pretty well avoid doing a checking a rebound value जदि डिस्चार्ज करिवे डिस्चार्ज कला बेले कोन करिवे देखिवे फोटोथेरापी जो छुआ को बंद कर देले दीटा वैल्यू तळे आपनकर फोटोथेरापी परे वैल्यूज आर लेस देन 2 to 3 मिलीग्राम आज for the cutoff value and there is no chance of having rebound he is not having high risk jaundice तो आपण डायरेक्ट छुट्टी कर दे परिबे नले आपण जदि क्लिनिकली कोनोसी बेबी को फोटोथेरापी लागि नाही किंतु फोटोथेरापी पूर्वरु आपण क्लिनिकल असेसमेंट करके डिस्चार्ज कर दउचंती ताले आपण को एटा भूटानी चार्ट बोली गोटे चार्ट थाए सेइठो हमें अडॉप्ट करिछु सेथरे आपण को देखा जिवो बेबी रो रिस्क फैक्टर अछि ना नाही नॉर्मली हमर एसएनसीयू रे जोटा नॉर्मल डिलीवरी हेई थाए बेबीज को हमें 24 आवर्स परे फीडिंग एस्टैब्लिश हे जाईची यूरिन स्टूल पास कर जाईची त कोई रिस्क फैक्टर सिग्निफिकेंट जॉन्डिस रो नाही त जनरली हमें 24 to 72 आवर्स छुट्टी कर दंतु एम्ति बेबी को जदी डिस्चार्ज कर दउचंती आइडियली सेमान को 48 आवर्स परे आउथरे आसीकी देखैबा कथा वर्तमान बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू कॉल देम देन if there is facility for video conferencing or teleconferencing then better to see them or we can tell them to just have a assessment on over video conferencing whether child's jaundice is progressing it might not be as reliable as your assessment by your own presence but still ideally it should be done जदि आमे 72 आवर्स रे परे कोनोसी नो हाई रिस्क वाला पेशेंट को डिस्चार्ज करछंती तार जॉन्डिस क्लिनिकली एते सिग्निफिकेंट नाही ताकू आमे फॉलो अप करबा किछि एम्ति ऑप्शनल अछि सेटा दरकार भी नाही जदि आपण जो बेबी को रिस्क अछि फोटोथेरापी जॉन्डिस हबार जे कि RH इम्यूनाइजेशन बेबी अछि आपनकर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी G6PD डेफिशिएंसी सेम्ति बेबी को बेटर टू अवॉइड ईयरली डिस्चार्ज प्रैक्टिकल पर्पस पई आपण 48 आवर्स परे ही डिस्चार्ज करिवा कथा जदी आपण को अर्जेंट बेसिस रे कोनस बेबी को 24 to 48 आवर्स रे डिस्चार्ज करूचंती ताकू हम बेटर हबो कि आपण को नेक्स्ट दिने कि 2 दिन भीतर आउ थरे ताकू डाके कि देखैले काइना सेही बळी बेबी मान को घरे जाई कि जॉन्डिस हबार अनडिटेक्टेड जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हबार बहुत चांस बेसी थाए नेक्स्ट स्लाइड फोटोथेरापी जदि आपण देई देले तापरे आपनकर बिलिरुबिन कमुनी व्हाट आर अदर पॉसिबल मेडिसिन्स और ड्रग्स व्हाट यू आर सपोज टू गिव एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होची फास्ट फॉरमोस्ट treatment which is required for those babies who are having uncontrolled hyperbilirubinemia despite giving phototherapy or any baby who is having jaundice along with bilirubin induced neurological damage ताले आपन को exchange transfusion करिवा को दरकार पड़ी पारे ए चार्ट ता आपन को मु ऑलरेडी I have already explained this chart in detail in my previous slides. Next.
हाँ जस्ट ओके सो हाइड्रेशन थेरापी विषय में टिके कहवाक चाहिए यहाँ बहुत इंपोर्टेंट थाए आपण हाइड्रेशन थेरापी कौन जो आपको गोटे स्लाइड में आपको कही व्हाट इज नोन एज ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस इज बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इनएडिक्वेसी जदि आपन को कौन बेबी जॉन्डिस एते बेसी अच्छी हाइड्रेशन थेरापी समस्त करा जाए ना ओनली दोज बेबीज हु वी आर सस्पेक्टिंग जो जॉन्डिस is pathological jaundice very high value at the level of exchange transfusion आपन को एते हाई वैल्यू अछि कि exchange transfusion रो दरकार पड़ी पारे आपन पाखरे exchange transfusion रो फैसिलिटी अवेलेबल नाही प्लस आपन को बेबी रो सिग्निफिकेंट डिहाइड्रेशन रो आपन को सब कोरोबोरेटिव एविडेंस मिलुची मदर रो मिल्क आउटपुट नाही आ बेबी रो यूरिन पास कम करूची आपन को पाखरे बर्थ वेट आ एबे रो वेट भितरे significant weight loss achi 15% 20% of birth weight loss is there then there is chance that bilirubin hyperbilirubinemia is due to dehydration in that case to buy some time basically आपण जेपर्यंत exchange तो करबा को ही पड़िबो किंतु blood exchange transfusion करबा पूर्वरु and to avoid exchange in some of the cases हमें कोन करंती हाइड्रेशन थेरापी स्टार्ट करंती सही बेबी को हमें ओरल फीडिंग तो अर्डली दियंती ही 150 ml per kg जोटा हमर नॉर्मली चार्टिंग करा जाए सेटा दियंती देन वी गिव एक्स्ट्रा सप्लीमेंटरी फीडिंग जदि बेबी स्टेबल अच्छी जदि आपण भाबुचंती बेबी को एक्स्ट्रा सप्लीमेंटरी फीडिंग इश्यू करबा कष्ट होई जिवो मदर रो मॉनिटरिंग हेई परिबो नै 20 ml per kg एक्स्ट्रा फीड आइदर आईवी फ्लूइड रे दियंती अदरवाइज ओरल फीड रे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दिया जाए फॉर एग्जांपल आपनकर जदि गोटे बेबी डे 6 ऑफ लाइफ डे 8 ऑफ लाइफ हे गलानी टर्म बेबी 3 किलो रो बेबी अछि आपण तेनु डे 8 ऑफ लाइफ रे 150 ml per kg ताको फीडिंग मिलिया कथा जेहेतु आपण सस्पेक्ट करछन्ती ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस अछि एंड इट इज एट एक्सचेंज जोन बेबी रो एक्सचेंज जोन 21 मिलीग्राम अछि आपनकर जॉन्डिस इज अराउंड 23 और 20.5 that means baby is at the level of exchange or crossing the level of exchange ताले आपण कोन करिवे फोटोथेरापी स्टार्ट कर देबे इमीडिएटली एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन पई ब्लड अरेंज करबा पई पठेई देबे से सब कला भितरे मझिरे जो 6 घंटा रु 8 घंटा 12 घंटा मिलिबो सेइथरे आपण रैपिड फोटो बिलिरुबिन कम करिया पई यू कैन इंक्रीज द फ्लूइड जदि ओरली दउचंती 150 रु 170 ml कर देले जदि ओरली आईवी दउचंती ताले 150 प्लस 20 ml per kg एक्स्ट्रा फ्लूइड आपण रिलैक्स कर देबे सेथरे कोन हो जाए बिलिरुबिन ड्रॉप विल बी लिटिल मोर ड्रास्टिक टिके जॉन्डिस जल्दी जल्दी कमी जाए आ हमें हमर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रो देखुछु बहुत सारा बेबी कर जोडा को एक्सचेंज जोन पाखा पाखी थांती से मानकर भितर 20% बेबीज वी कैन अवॉइड डूइंग एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हैला थर्ड इज आईवीआईजी गोटे ड्रग जोटा इम्यूनोग्लोबुलिन सेटा एक्चुअली पुराना 3-4 years back there was a tendency for giving IVIG in hyperbilirubinemia requiring exchange transfusion in if the cause is due to RH isoimmunization other hemolytic jaundice but bartaman IVIG ro ete rule nahi it is a costly medicine not available everywhere it is if given unmonitored way there is high chance that the baby might develop anaphylactic reaction hypotension if undetected can die due to IVIG related complications sethipai now we are discouraging not to give IVIG आउ केते गुडा ड्रग्स अछि जोडा का एक्सपेरिमेंटल बहुत थरा ता विषय ट्रीटमेंट करा जीवो न करा जीवो मेनी दे आर ऑल रिसर्च oriented drugs not given practically like phenobarbital zinc tin metalloporphyrin ए सब गुडा का थाए सेडा का आपनकर algae से ड्रग गुडा को किछि एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें यूज करू नै नेक्स्ट आ गोटे स्लाइड आपन को कहिबे एटा टिके हमर टॉपिक रो टिके बाहर को conjugated hyperbilirubinemia as a staff nurse we should be able to differentiate between जेते jaundice आपन को मु पूर्वरु कहली सेगुडा सब unconjugated hyperbilirubinemia आपन जदी laboratory value पठेबे total serum bilirubin conjugated and unconjugated differentiate करिवे majority maximum amount of the bilirubin out of the total will be unconjugated bilirubin but केते गुडा को केस रे हमको conjugated hyperbilirubinemia डाउट करिवा को पड़ी पारे व्हाट आर द क्लिनिकल सिनारियो प्रथम हैला आपण जदी बेबी रो जॉन्डिस आपण प्रोसेस करछि मोर देन 14 डेज इन टर्म बेबी
and more than 21 days in preterm babies. सेटा आपण जेतले pathological jaundice prolonged jaundice रे आपण suspect करि परिबे conjugated hyperbilirubinemia. Second is color of stool and urine. जेतेबेले unconjugated hyperbilirubinemia जोटा कि maximum baby रो थाए सेतेबेले आपण first things पचारिबे urine रो color कोन अछि. Urine रो color जदि yellow गाढ़ा yellow अछि that indicates it is, and what is the color of urine and what is the color of stool. Urine ro color yellow गाढ़ा yellow पूरा हलदिया color type रो yellow अछि और stool रो color माटिया color हे गलानी not yellow माटी color माने चिट्टा माटी color हे गलानी आपनकर जोटा pale color stool कोंती सेही दिटा जिंस जदी आपनकर रहिला गाढ़ा color urine and pale color stool jaundice persisting more than 2 weeks of life और रिस्क फैक्टर ये सब जिनस जदी अच्छी आ गोटे प्री टर्म रे जदी बेबी को बहुत दिन हैला हॉस्पिटल रे थिला ताकू टीपीएन मिलिछि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन मिलिछि सेप्सिस अछि से सब रे ए कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हबार चांस थाए. कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया थिले कंफर्म करिवे एटा अपन सस्पेक्ट कले कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया अछि त कंफर्म करिया पे कोन करिवे गोटे लैबोरेटरी रे अपन एलएफटी पठेबा को पड़िबो लिवर फंक्शन टेस्ट सेतरे अपन ओटी पीटी अल्कालाइन ओटी पीटी टोटल सेरम बिलिरुबिन कंजुगेटेड एंड नॉन कंजुगेटेड फ्रैक्शन देखिबे जदी डायरेक्ट बिलिरुबिन और कंजुगेटेड बिलिरुबिन रो वैल्यू मोर देन 2 mg per deciliter हेतिबा दरकार. व्हाई इट इज इंपोर्टेंट फ्रॉम ए प्राइमरी हेल्थ केयर पर्सपेक्टिव काहे कि इंपोर्टेंट एटा तो आपन कहबे हमको तो देखिबा को पड़ोनी हमें काहे कि जानिथिबा दरकार एटा एथि पई जानिथिबा दरकार कि कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया रो गोटे मेजर कॉज होची आपनकर बिलियरी एट्रेसिया जते बळे आपनकर लिवर मु जते आपन पैथोफिजियोलॉजी रो गोटे डायग्राम देखैतिली सेतरे देखितिले बाइल संगरे बिलिरुबिन ता सिक्रेट हुए जीआई ट्रैक्ट को जदी से बाइल डॉक्टर एट्रेसिया अछि माने सेटा ठीक से बनी पारि नाही ताले कोन हबो आपनकर बाइल ता बिलिरुबिन आसी परिबो नाही जीआई ट्रैक्ट को सेटू एक्सक्रीट हेई पारेनी स्टूल रे सेति पई स्टूल कलर ता व्हाइट हे जाय आ सेटा अनकंजुगेटेड हे कि रही थाए सेति पई से यूरिन माध्यम रे एक्सक्रीट हुए आ यूरिन रे एक्सक्रीट हैला बळे यूरिन एक्सक्रीट हुए तो यूरिन बिकम्स डार्क कलर. सो तेथि पई अल्टीमेटली कोन हबो से बिलियरी एट्रेसिया इज ए सर्जिकल इमरजेंसी सेटा ट्रीटमेंट करिवार अछि ईयरली करिवार अछि आपनको यू हैव टू रेफर दोस केसेस ईयरली टू सर्जन पीडियाट्रिक सर्जन फॉर ए डाइवर्जन टेक्निक और ईयरली सर्जरी यदि आपमे सर्जरी रो आइडियल सर्जरी टाइम इज बिफोर 6 वीक्स और बिफोर 8 वीक्स यदि हमें सही विंडोटा मिस करिवा सही बीमारी जोटा बिलियरी एट्रेसिया बिकम्स irreversible. Success of surgery becomes less as the child's age increases. Next slide. Last 8 आपन केबे केते बळे एसएनसी रे when you will decide being a physician or staff nurse in SNCU when you will decide that you cannot manage this child it requires to be referred to other hospital or higher centers like district hospital हो कि medical college हो सेतबळे केते रेफर करिवे मु से जिंस गुडा आगुर आपन को कहि दैछि स्लाइड रे गोटे हला बिलिरुबिन इंड्यूस न्यूरोलॉजिकल डैमेज अछि जदि आपन देखिले फोटोथेरापी देला परे भी आपन सब जांको प्रिकॉशंस नै चंती मैक्सिमम सरफेस एरिया बेबी रो एक्सपोज करचंती देन डिस्टेंस को बहुत कम रखि चंती ताकू डिस्टर्ब करूनांती ता परे भी आपनकर बिलिरुबिन वैल्यू कमु नै बिलिरुबिन जदि फोटोथेरापी आपन स्टार्ट करले वी एक्सपेक्ट दैट बिलिरुबिन वैल्यू शुड डिक्रीज बाय 0.5 मिलीग्राम पर आवर जदि आपनकर आपन 12 घंटा रे रिपीट कला बळे जदि बिलिरुबिन वैल्यू ता आपनको एटलीस्ट 4-5 मिलीग्राम कमी नै पुराना वैल्यू टू तार अर्थ होची आपन फोटोथेरापी ता एफिशिएंट नाही. Third is आपन कहि देली persistent hyperbilirubinemia conjugated hyperbilirubinemia and any sick neonate जे हेमोडायनामिकली स्टेबल नहीं ताको वेंटिलेटर दरकार पड़ी पारे शॉक अच्छी आयोट्रोप्स दरकार पड़ी पारे कि सीपैप दरकार पड़ी पारे से सब बेबी को बेटर होची आपण हायर सेंटर को रेफर कर देबे. नेक्स्ट स्लाइड. ओके द लास्ट स्लाइड जस्ट टू एटा बेसी दरकार पेरेंट्स करबा पई as well as the staffs managing the babies in SNCUs हमर केतोडा को मिथ थाए पेरेंट्स माने आसी कहिबे मां माने को जे मैडम एई उडा का खाइले हमर असुविधा हो जाउची हम डाली खाइबोनी हळदी लगेबोनी कि आपण ऑरेंज खाइबेनी कि आपण कैरेट खाइबेनी ए सब उडा का खाइले आपनकर जॉन्डिस मां जदी ए सब जिंस खाइबो जॉन्डिस बढ़ी जाए किंतु एक्चुअली फैक्ट होची ए सब जिंस संगरे किछि रिलेशन नाही. सेकेंड है सबू जॉन्डिस जो न्यूबॉर्न रे जार भी क्लिनिकली टिके हलदिया देखागला से माने होचंती सीरियस आ समस्त को आमे हायर सेंटर को पठे देबा हम निज हॉस्पिटल रे कि निज एसएनसीयू रे मैनेज करि परिया नहीं. एक्चुअली होची मैक्सिमम जॉन्डिस जोटा आपण कहली 70% जॉन्डिस को किछि फोटोथेरापी बारिका दरकार पड़ी पारेनी रेस्ट
30% ରୁ 20% जॉन्डिस को निजे आमे फोटोथेरापी जदि देला इफेक्टिव फोटोथेरापी आम निजर यूनिट रे देकी याकू मैनेज कर परिबा ओनली 5 to 10% जॉन्डिस विल हैव पुअर रेस्पॉन्स टू थेरापी विल रिक्वायर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सेथि पई आमे हायर सेंटर को पठेइबा आ गोटे जिंस हला समस्ते एटा पचारंती मैडम आंकु देई परिबा कि आमे सन रे रखि परिबा सन बाथिंग सूर्य किरण रे रखिबा कि जॉन्डिस ता ठीक हे जाई परिबो तो सन बाथिंग रो सेमती किछि एविडेंस नाही सन बाथिंग रे जो आपनकर सन रेज अछि तार फोटोथेरापी तार जो वेवलेंथ अछि वेरी वाइड सो ता संगरे आ गोटे असुविधा थाए सेतरे हार्मफुल यूवी रेज भी थाए सेतिपाई फोटोथेरापी देन द वेवलेंथ इज वेरी वाइड फोटोथेरापी पाई इफेक्टिव नुह थर्ड इज यूवी लाइट थाए जोटा हमर स्किन डैमेज करि पारे थर्ड होची जदि बेसी टेम्परेचर राकू रखी देले सेतरे कोन हे पारे आपनकर असुविधा सेतरे आपनकर स्किन बर्न हे पारे तो आमे सेतिपाई एडवाइस करू देखंतु फोटोथेरापी जॉन्डिस कम करिया पई आपण सन बाथिंग तो करबा किछि दरकार नाही किंतु 10 to 20 मिनिट्स प्रति दिन आपण सकाळे इयरली मॉर्निंग सनलाइट रे रखि परिबा सेतरे आपण विटामिन डी रो प्रोडक्शन रे हेल्प करे बट दैट हैज नो रोल इन जॉन्डिस मैनेजमेंट लास्ट होची जोटा आपण कहितली केबे भी मदर को डिस्करेज करिवे नाही ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस अछि आपनकर ब्रेस्ट मिल्क ता डिस्कंटिन्यू करिवे आपण ब्रेस्ट मिल्क पीवा जगु जॉन्डिस होची आपण ब्रेस्ट मिल्क बंद कर दियंतु सेटा को भी आपण तांको डिस्करेज करिवा को पड़िबो आउ गोटे लास्ट होची पचारिबे जदि आपण पाखरे हालोजेन बल्ब नाही सीएफएल बल्ब नाही किछि भी बल्ब आपण पाखा नाही केते जण पचारि पारंती आपण नॉर्मल घर बार लाइट रे देई परिबे फोटोथेरापी देई परिबे कि न देई परिबे व्हाट इज के कोन कहिबे फोटोथेरापी पई बार लाइट रे फोटोथेरापी जदि किछि नाही यू कैन स्टार्ट विथ नॉर्मल बार लाइट और जो आमर घरे आग जमाना रे जो व्हाइट येलो कलर लाइट बल्ब थिला सेथरे भी फोटोथेरापी देई परिबे बट तांकर एफिशिएंसी बहुत खराब आमर नॉर्मल जो फोटोथेरापी मशीन जोटा स्टैंडर्ड फोटोथेरापी मशीन कंपैरिजन रे एफिशिएंसी इज वेरी बैड एंड इट शुड बी ए न्यू ताको गोटे नुआ बल्ब लगाइले किछि मात्रा फोटोथेरापी रे काम आसी पारे okay with this I will like to stop my talk and I hope that people have learned something from our discussion and I am happy to take your questions. Thank you, Dr. Tanushree. It was a really great presentation and भावुची आम स्टाफ माने बहुत किछि important information regarding management identification jaundice यादरा निज आडे नहीं पारिथिबे आउ निजर डे टू डे प्रैक्टिस रे सेटा इम्प्लीमेंट करिकि Yes. हेल्प कियो थैंक्स अ लॉट आउ या से तो आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर श्यामा मैडम एंड डॉक्टर माया मैडम for participating apanako participation itself encouragement for all our staff nurses and doctors participate so thanks a lot madam ame asha korchu agore bhi apne participate karibe There are some encouragement karibe there are some now, questions in the chat box please yes madam yes sir so the first question Sasmita madam ko pai achi madam if we give injection oxytocin without checking the second baby in case of twins then what should we do जदि आइडियली तो आगो देखिक दबा कथा जदि दिया है जाइछि it is very difficult we must give oxygen some uterine relaxant and immediately if the baby is viable fetal ultrasound is good we will go for cesarean section immediately the effect of oxytocin will take 20 to 30 minutes to get go over so by that time the baby may not leave so we have to deliver quickly madam second question hala can episiotomy incision be repaired without assistant yes it can be done without assistant because usually we need assistant during the mucosal layer to give traction on the suture material but that can be done usually they do single-handedly it can be done okay madam third question hala sometimes patient comes with vulval swelling in the second stage in that case what should we do so vulval swelling may be due to hypertension preeclampsia they usually come with edema so you have to know whether it is edematous swelling or it is a hematoma
And if it is a hematoma, it has to be an obstructed labor. In that case, you have to deliver by cesarean section, and then you have to, if it is a hematoma, you have to repair that, drain that. Am I audible? I got a question, madam. Is it mandatory to do a PR examination in case of every episiotomy? Should we look for anal sphincter integrity before or prior to commencing the repair? Yes, if you have done a deep episiotomy and you have to stitch in 2 layers to omit the dead space, and if you suspect you might have taken the rectums, then you should definitely do a peer examination to rule out any stitch bite of the rectum. An anal sphincter, it will be visible. If it is there, there will 2 tone ends can be seen easily. The anal sphincter tear can be visible. Hello? Hello? Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. You are audible. That's it for Sasmita, madam. Yes, madam, you are audible. Madam, sorry for ତେଣୁ ଯଦି ଡିପ୍ ଏପିସିଟୋମି ହେଇଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ପିଆର କରିବ କାରଣ ପିଆର କରିବ ଯଦି ରେକ୍ଟମ ଟା ନେଇ ଯାଇଥିବ you have to cut open the stitch. May I be allowed to Yes madam, yes madam. PR should be done after every episode. It should not be that only when you suspect a sphincter injury. It can be missed if you don't do a PR. So PR is a must before every episode and after every episode. And how to identify? Hello, am I audible? Am I audible? Yes, Yes, ma'am. madam. Yes, ma'am. How to identify sphincter? There are 2 sphincters, external sphincter and internal sphincter. External sphincter appears like red meat, and there are 3 degrees of tears. It can be totally torn and get retracted into the ischioanal fossa, or it can be partially torn. And if it is totally torn, there is a internal sphincter is seen as white meat, and that also is an important muscle, most important muscle of the body, most intelligent muscle. If that is not repaired, there will be, even if you repair the sphincter, there will be incontinence to loose feces and to flatus. So healthcare workers should be able to identify what it is. And since there is dearth of time, I recommend Meena and the UNICEF and the DFW to invite all of you to attend the on 10th. It is actually for Indian Standard Time. It's 6:30 p.m. The World Authorities on sphincter injuries, perineal injuries, how to detect them. It's a vast panel discussion on that itself. I would encourage everyone, even the nurses who are conducting deliveries, to attend this, and the NHM and DFW should encourage them to attend. It's on 10th of October, and the link has been given. I've shared it with the UNICEF and shared it with Dinabandhu sir, even the NHM, MD NHM. So I would, there's a lot to know about episiotomy and how to repair, what suture material to use, and what is the suturing technique. And if a healthcare worker detects a sphincter injury, what she should do, she should not manage. And within 48 hours, it can be managed. If there is no blood loss, as Susmita Madam pointed out, you can put a pack and send the patient to a center where there is a theater and it can be repaired. So there are a lot of issues to episiotomy, and I would have liked it if Susmita Madam had talked of AMTSL today and episiotomy on another day, so that we could have done justice to both the topics. Anyway, but she has done quite a good job with both. So thank you, Susmita. But I think we should go a little more into detail of these topics. They're very, very important. Both are very important. I wanted to speak on one. Yes, yes. There are so many issues in AMTSL also which could have been discussed. No, and it's okay, but we have done fine. And I think Meena would arrange another
session for both again AMTSL only, then again episiotomy only. But before that, let us all participate in that webinar of Ayuga and Foxy and URPSSI, which is being organized on 10th, and widely it should be disseminated and everybody should see it. Thank you, Sasmita, for a good session. Madam, I would request Maya Madam for her inputs. I want to have one point to Dr. Tanushree. Yes, sir. Are you connected? Yes, sir. Regarding sunbath, I want to tell one thing. It is completely no role for jaundice. Number one. That is what I. So number two, for vitamin D synthesis, early morning sun rays is not helpful. It is after 11 a.m. or 12 noon that is needed. So there is no need of taking the baby to the early morning sun. That is deleterious. Rather, if early morning there may occur hypothermia if there is air current, etc. So we must be very clear message to give to the audience. So sunbath is not at all required for the newborn baby. I think that will be good. That should be fine. Basically, what they are asking, sir, they are asking most of the time, can we do massage, oil massage to the baby in early morning sun? That we say, okay, you can do. That is helpful that time. For massage, no sun is needed. Yeah, oil but is needed. The typical grandma advice is like doing it in the sun. message is not to take the baby. Correct, sir. Correct, sir. There is one more question for you. Yes. If a baby develops jaundice in the 8th day, yes, and admitted with gestational is 35 weeks. So develop with jaundice. So whether we should follow the chart or not? On the day of life, like day 8, the baby has already crossed 36 weeks. So we should go for a AP chart. Hello. Tanushree, I want to ask you one question. Hello, ma'am. I want to ask you, जदि के घरे जो LED बल्ब लगेबे केतना बल्ब केते स्ट्रेंथ रा लगेबे ना LED बल्ब मैडम जोटा सेटा थाए LED न थाए CFL थाए CFL yes CFL रे टिपिकली हमें मिक्सिंग करी के लगांती ब्लू एंड ग्रीन लाइट रो फोटोथेरापी मशीन आपण टिपिकली फोटोथेरापी घरे जदि गां रे के घरे दबा के चाहिले is it possible? No, actually it is not advisable. Not advisable. आमे घरे जो आगे कहउतले घरे 1.5 फुट ऊपर लगेबो लाइट सेमती not advisable. It has some effect but we cannot monitor. It is not मतलब standardized नहीं. It is not standardized, madam. Okay. Okay, thank you. Our CFL light should not be confused with the normal bar light. Apnakar normal bar light ra cost to one CFL light is at least 5 to 10 times costlier. तो आपनकर सब जगह भी मिले नहीं CFL लाइट रे आपन को स्पेसिफिकली मेंशन करिवा को पड़िबो कि 450 ରୁ 470 नैनोमीटर रे जे रेडिएशन प्रोवाइड करछि we require that light. Okay, so it's not possible at home. You have to admit the baby. Definitely. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Lucy madam. Thank you, Vijay. Hello. Dr. Maya madam, आप क्वेश्चन थी कि any participants want to ask questions can unmute and ask. Okay. Hello, madam. Hello, sir. Namaskar. Hello. हाँ कौन तू? Hello, sir. Namaskar. DHS खोर्धारू कोची स्टाफ नर्स sir अंजलि बराड़. Hello. क्वेश्चन पचारंतु. Sir, actually जदि हमें गोटे 1 day रो बेबी एडमिशन होची टर्म IGR मैडम तो कहले 12 घंटा पर से टीसी भी करी परिबा किंतु सर 24 hours परे 24 hours परे after 24 hours of life.
मैडम धर आम गोटे टीसीबी करूचु तो मॉर्निंग रे जदी करूचु तो 8 पॉइंट समथिंग इवनिंग रे कला परे तो जदी 5 इंक्रीज होची सेटा मैडम किछि माने सेमति किछि करि हबो ना नाही 24 आवर पर आमी ही करि परिबा नहीं देखो फास्ट ऑफ ऑल आपन जदी जो सिनेरियोटा आपन मते कहिले दैट सिनेरियो इज लेस देन 24 आवर्स लाइफ तो सेथरे टीसीबी इज नॉट रिलायबल सेकंड एनी जॉन्डिस इन लेस देन 24 आवर ऑफ लाइफ इज ए पैथोलॉजिकल जॉन्डिस तो आपन सेथरे वेट करिवे नहीं संगे संगे सेरम बिलिरुबिन माने ब्लड सैंपल ड्रॉ करके पठेइबे सेथरे टीसीबी इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल 24 आवर्स रे आपन ब्लड सैंपल ही करबा को पड़िबो ओके मैम थैंक यू मैम Okay. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, madam. Welcome, madam. Actually, my question is already in the chat box. I think it was directed at Dr. Sasmita Swai if she is available. Madam, Sama madam called the line. I told ki at least in deep episiotomy you must do a PR, but madam told routinely in each and every case of episiotomy a PR should be done. Before or after the repair, that's important. I think if you suspect in the middle, you should do an assistant, you take an assistant, do the PR. If you have taken the bite, you remove it. And if it is not assistant, you can put on a gloves and do the PR and again discard that and put on another gloves. If you are doing it after you have the procedure, then we can detect also hematoma meanwhile. But if you are doing it before we start the procedure, is there any way that we can see whether there is an undetected anal sphincter tear maybe, which later will cause a problem? So, so that we can repair it at the same time. So repair same time. So in between you have, if you suspect anal sphincter tear, and if you suspect, then in between you have to do a PR examination. That I have already told. You ask your assistant to. Amma madam available, or is she off? Yes, I'm there. I'm there. Just one line, madam. Could you just clarify this? I'm there. You have to do a PR, full assessment of the wound before you start suturing. Full assessment. And PR before you start suturing is mandatory in every episode. From the apex to the transverse perineal muscles to the sphincters, you have to do a PR, and as Sasmita said, you change your glove. No need to change because she's the same woman. You can just take your finger out and clean it with povidone iodine, and you can start doing the same pair of gloves. No problem. No need to change gloves. So we have a feeling that once you put your finger into the rectum, you need to change your gloves. That has been it's not necessary. So the thing is, you have to assess all the layers, everything before suturing, because the sphincter can be even a partial tear of the sphincter may be missed if you don't do PR. And Sasmita said yes, during suturing also PR may be necessary, especially if the deep transverse perineum has been torn, and when you are taking a bite, you may take a bite into the rectum. So she's absolutely correct when she says that an assistant can put a finger, or you yourself can put a finger. Better that you, when you are suturing, it's better that you feel the needle going to the depth and coming out, not entering into the rectum. Once it enters the rectum, with your finger you are going to feel. So it is the surgeon, better that the surgeon does the delivery, the person who conducts the delivery puts the finger with the left hand finger and with the right hand. When you're suturing the deeper layers, you may need 2 layers. At that time PR also is necessary, and after you have finished the whole thing, again PR should be done. Thank you. So I want to tell Sasmita something. Hello. Yes. Sasmita. So regarding that answer, would you take assistant in every case or not? I feel if you take assistant, it is better. It is better, but always assistant not available. It's not available, that is different issue, but we should try to take assistant. First thing, this what madam said, we can do a PR and do the deep layer stitching, so that if our finger is pricked, so first of all, you prevent deep episiotomy by timely doing the episiotomy. So that these complications will be less. That is very, very important, timing of episiotomy.
Yes. That is very important. That is there. So assistant, if available, definitely should be If taken. it is available, it is always better. Definitely it is good to take assistant. Yes. Okay, thank you. There any other question, Asutosh? No, sir. There's no, Okay, we can conclude. Other question. So, Yes, sir. myself, Dr. Ojoswini, just want to say a few words. Yes, Yes. Madam, Namaskar to my teachers, Shama madam, Maya madam, Lucy madam, Sasmita madam, and thankful to Sasmita madam for nicely presenting the topic on episiotomy and the AMTSL. Very lucidly she had presented. And I am so thankful to Tanushree for such a vast topic she has presented in a brief manner, which is practical from the practical point of view. Just a few points I want to add. As Madam has told, there is no routine episiotomy. It should be restrictive but a selective one. Many of the procedures in the labor are no routine, like no routine saving, no routine enema, no routine Foley's catheterization, and no routine fundal pressure. So this should we have to adopt. And as Madam has already told, the PR and PV examination. So PR examination is a must prior to and during and after. During in some cases like the deep episiotomy, but before and after it is a must. And we have to do also PV examination before we are sending the patient from the labor room to the ward, because many times there might be hematoma development and we are just sometimes ignored. We do not inspect the patient also. We have to look, I have to inspect, we have to palpate the episiotomy before sending her to the ward, because many times hematoma formation chances there. And one thing, sometimes to see the apex, in a difficult situation or extended episiotomy, we put a just a gauge piece, a ball of gauge piece to separate the cervical flaps or the apex of the, to visualize the apex of the episiotomy. So if you are doing the PV examination, that is, we can see it, we should not forget it. So by the PV examination, we are sure that nothing is there inside the vagina. And one thing, if there is any suspicion of hematoma formation in the episiotomy, could we give vaginal pack? That is one of my questions. Could you give vaginal pack just for 6 to 8 hours and the tranexamic acid injection? If you are having any suspicion of the hematoma formation. Yes. If it is small hematoma, it is not increasing, you can observe and give a pack. But if it is a big one, you have to drain it. And after drain also, you can give a pack. That will also press and stop the bleeding. Yes, ma'am. Hello. Thank you, Ajaswini. Kuantu. Hello, sir. Namaskar, sir. More actually confusion baby अच्छी तो यदि हमें गोटे below 35 weeks baby को day after day 8 day 9 से develop कला jaundice तो ताले हमें chart follow करीबा से तो किसी already 36 week ही थी ना ताले हमें graph नहीं follow करेंगे can also follow graph. We can follow AAP chart. That is easy to maintain, and there is no harm in following that. I have already told in preterm babies only we strictly follow that weight wise criteria. तापरे better होची phototherapy पई हमें से chart AP chart follow करियो. आपण weight wise chart follow करिया पई पचारछंती. 35 weeks just borderline ना. 35 weeks तापरे आपण postnatal age रे तो 9 days already हेई गलानी. So it is better to follow postnatal chart. Renubala, got your answer? Thank you, sir. Okay. Any other participant want to interact? ଆମର ବହୁତ pediatrician ଆଉ gynecologist join କରିଛନ୍ତି, medical officer ମାନେ ବି join କରିଛନ୍ତି. ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି interaction କରିବା ପାଇଁ, suggestion ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ଆମେ welcome କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି suggestion ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ. ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ suggestion ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ. Yes, madam. ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ମାନେ ଆଣ୍ଟିନାଟାଲ ପିରିୟଡ ରେ ପେସେଣ୍ଟ କୁ ଶିଖେଇବେ, ନିଜେ ନିଜେ ନଖ ତ କାଟିବେ, ହାତ ଭଲ କରି ଧୋଇକିରି ଘିଅ କିମ୍ବା ଗରମରା ନଡିଆ ତେଲରେ ପେରିନିୟମ କୁ ମସାଜ କରିବେ. ପେରିନିୟମ କୁ ଭଲ କରି ମସାଜ କରିବେ, ତାକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିବ ପିଭି କଲା ବେଳେ ଯେ ଏଇ ମସଲଟାକୁ ତମେ ମାଲିଶ କରିବ. ମାଲିଶ କଲେ need for episiotomy is reduced by 9 to 11%. And perineum ଟା ସଫ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ ଯେ ଏପିସୋଟୋମି ଦରକାର ନାହିଁ ପାରେ, ଯଦି ବି ହବ ଛୋଟିଆଟେ ଦରକାର ହବ. ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରୋସିଡିୟର ଡ୍ୟୁରିଂ ଲେବର
to prevent the need for episiotomy. Conduction of second stage is extremely important. How to flex the baby's head while delivering, giving perineal support is extremely important, which is being given up nowadays. ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ନର୍ସେସ୍ ମାନେ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ମାନେ ଡେଲିଭରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ବି। ଏପିସିଓଟୋମି ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପେରିନିଆଲ ମସାଜିଂ ବିଫୋର ଇନ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଅଫ ଦି ଆଣ୍ଟିନେଟାଲ ଚେକଅପ୍ ଏଟାକୁ ଶିଖେଇ ଦେବା କଥା ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। थैंक यू मैडम। मते बहुत आज खुशी लगुची जे आमे ए जो प्रोग्राम टी आरंभ करथिले बहुत छोट आकार आमे आरंभ करथिलु एक्चुअली अनडिवाइडेड कोरापुट पय जेतले आरंभ करथिलु, किंतु वर्तमान मु देखुची ओडिशा सारार समस्त स्टाफ नर्स डॉक्टर्स मेनली ओजी और पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट को आमे कनेक्ट करि परजु। जदियो पार्टिसिपेंट्स 100-150 भितर जॉइन करूचंती, बट दिस नेटवर्क इज अराउंड 700 to 800 स्टाफ नर्सेस एंड डॉक्टर्स कनेक्टेड। सो मु बहुत धन्यवाद देवी माया मैडम, लुसी मैडम, सस्मिता मैडम, ओजस्विनी, श्यामा मैडम समस्ते आमर गायनेकोलॉजिस्ट माने बेसी इंटरेस्ट नै जंती एवं सबथरे जॉइन करूचंती एवं दिस इज ए गुड साइन। आमे निश्चित भाव में पेरिफेरी रे जो माने डेलिवरी पॉइंट रे काम करूचंती तांकर नॉलेज और स्किल को बूस्ट अप कर परिबा एवं बहुत से माने लाभवान हेबे मैडम। मु आपन को बहुत धन्यवाद दोची एवं एवं डिस्कशन आमे जारू करंतु, जारी रखितांतु एवं आपन मानक इन्फॉर्मेशन तांका पाखरे पहुंचंतु। कोन मैडम कहिबे? Aditya, congratulations for this effort. All out to support you. I love this kind of attitude. You are really a brave soldier, and you want to improve the maternal and child health in Odisha. Take the leadership. We are behind you. Thank you. And this is an opportunity. हेलो हाँ कोंतु मा मैडम नमस्कार। नमस्कार कोंतु मा एडीएस पाटनागढ़ रो कहूची हमें बेले बेले एपिस्टोमी कले देखा जाए से फैटी स्ट्रीट लोक मानकर व्हाइट रो ये बडा देखा जाए, सेटा कोन हमें पंक्चर कर दबो ना सेटा थिबो स्टिच मारिबो? May I request Madam Shama Madam ki Sasmita Madam to kindly take the question? Hello. हाँ मैडम व्हाइट रो देखा जाए कोन रिपीट एपिसोटोमी केस रे तो गोटे थोर एपिसोटोमी हां गोटे थोर एपिसोटोमी जो तापरे आउथर कलर को नहीं एपिसोटोमी कला बेले बेले फैटी जो मान थांदी से मान को जणा पड़े जे व्हाइट रो ये भलिया माने बॉडी टाइप रो थाए, सेटा को हमें पंक्चर कर दमु ना सेटा थिबो हमें स्टिच मारिमु? व्हाइट रो कोन थाए? हेलो नहीं कोन व्हाइट रो थाए मु किछ बुझ परुनी। जदि तमे देखुछ गोटे ये अछि कि माने इंक्लूजन सिस्ट भलिया? हां गोटे माने सिस्ट भलिया थाए जन जनकर। हां सिस्ट भलिया थिले किछि जाय से पंक्चर भी करि पारो तो स्टिच साइकिरी तरो जदि तमे जटे एक्सरसाइज कर दे परिबो कि पाखे रे अछि वोन पाखे ताको एक्सरसाइज क्लियर कर परिबो। तमे कोन गायनेकोलॉजिस्ट? काम कहले मैडम? आपण गायनेकोलॉजिस्ट? ना ना मु स्टाफ नर्स। ओ वेरी गुड। आपण डाक्टर में आपण पाखो डाक्टर को ଟିକେ डाक्टर में देखे देबे है कोन से स्ट्रक्चर ता जदी सेटा ये हेतिबो बार्थोलिन्स ग्लैंड ता हेतिबो बार्थोलिन ग्लैंड ता ब्लॉक हेकरी जदी सिस्टिक थिबो तले सेटा बाहर पटे ड्रेन आउट करिया କଥା एपिसोटोमी आडी के आछिबो नि सेटा ना प्राय सब केस रे तो न थाए, प्राय गोटे गोटे माने फैट स्त्री लोक मानकर थाए। हां एक्चुअली कोन डाक्टर के देखे देबो put here. I think sometimes if there is they are very fatty jodi besi thile se fatty rahi tike cystic type of disease that is part of the fatty tissue, so that you can take the stitch along with it. gote bartholin ro ki inclusion cyst tike bada hobo seta jana padi exactly cyst, kintu eita apana jota kohchanti eta part of the fatty tissue, so you don't bother you stitch like a normal episode kichi problem. ha madam thank you. Not be a problem. ओके सर दिनबंधु सर जदी अछंती मीना मैडम ओवर टू मीना मैडम। ना सर कोंतु आउ किछि कार क्वेश्चंस अछि आउ किछि डिस्कशन? मोस्ट प्रोबेबली आउ नाही ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जे पोस्ट टेस्ट रे समस्त पार्टिसिपेट करिवे। सर कोंतु ना आर यू गोइंग टू डिस्कस द प्री टेस्ट क्वेश्चंस आर ना मु भाबुची पोस्ट टेस्ट ऑलरेडी से माने आंसर पाई जाई चंदी। पोस्ट टेस्ट जेतु हमें दबा को जाउचू we will not discuss, we will share the result. result रे जोटा maximum से माने जानि देबे जे this is the correct answer
आज्ञा सर फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क सर दियंतु। ओके ओके ताले वाइंड अप करंत सर आपण किछि कोंतु। हेलो का मते कहउछंदी सर सर आपण को सर no, it is a very nice webinar. There is good participation of all the faculties from pediatrics, gynec, and all the staff nurses. They are taking interest. As Dr. Aditya told, this movement has now extended to entire state. Started from undivided Koraput, then to the state. That is good. I think gradually we will take up small topics of practical utility to for the reduction of the maternal and neonatal mortality and morbidity. So with this, I thank you, Dr. Aditya and Dr. Meena and all the team for organizing these webinars. Thank you all. All thanks to all the participants. They are staying till the last. They are showing all the interest. So thank you all participants. Thank you so much, sir. Thank you. I have something for you. Yes, yes. जो bridging the gap गोटे अच्छी obstetric perineal injuries रो माने request करछन्ती प्री रजिस्टर करिया पई it will वॉइस तो कहीं मते माने सुना जाउनी ब्रेक होची वॉइस। हेलो हां मैडम कोठी रजिस्ट्रेशन करिया पे 10 अक्टोबर रे गोटे कोन अछि वर्कशॉप सेटा को मैडम कहउचंती करिया पे सेटा मैडम आपण पठे दियंतु लिंक पठे दियंतु वी विल शेयर द लिंक विथ ऑल द पार्टिसिपेंट्स मो पाखरे 8 ग्रुप मैडम अछि 8 ग्रुप्स जोथरे की मोर देन 100 पार्टिसिपेंट्स अछंती सेतरे माने रिक्वेस्ट करछन्ती प्री रजिस्टर करे पटे इंटरनेशनल यूरोगाइनी एसोसिएशन यूआरपीएसएसआई और पॉक्सी तरफ रु करा जाउछ एटा बहुत इनवैल्युएबल हो हम सब हेल्थ केयर वर्कर को पे थैंक यू ठीक अछि मैम थैंक यू।